शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। पेट्रोलियम क्लब ऑफ पाकिस्तान की टेक्निकल वेबिनार सीरीज में खुशामदीद। हमारा जो आज का सिलसिला है ये यकीनन हमारे जो पिछले सेशन हुए उसी की एक कड़ी है शेल गैस के हवाले से। और आज जो हम बात करेंगे इसमें वो शेल गैस पोटेंशियल इन पाकिस्तान। तो सबसे पहले इसमें प्रेसिडेंट पेट्रोलियम क्लब ऑफ पाकिस्तान और डीजी एचडीआईपी डॉक्टर सईद खान जदून साहब एक ब्रीफ ओवरव्यू प्रेजेंटेशन की शक्ल में हमारे सामने पेश करेंगे और उसके बाद फिर जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं वो उस पर अपने अपने राय का इजहार करेंगे, उसको हम डिस्कस कर लेंगे और फिर समराइज कर लेंगे। तो मैं डॉक्टर सईद खान जदून साहब से रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज प्रेजेंटेशन से सेशन का आगाज करें। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया यार। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीबॉडी। हमारे जो दोस्त इसको स्टेट में है, मेघल में अजहर मुस्तकीम है और प्लस नवाज भुगती एंड और कोलीग जो हमारे आउटसाइड है, बहुत शुक्रिया उन सबका। और यहाँ पाकिस्तान से भी जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, थैंक यू वेरी मच फॉर योर पार्टिसिपेशन। तो आज जो डिस्कशन मैं कर रहा हूँ, जो हम कर रहे हैं उसमें दो तीन चीज़ें क्लियर करने की जरूरत कर रहे हैं कि हम नंबर वन कि ये किसी खास कंपनी का डेटा नहीं है, मतलब पार्टिकुलरली विद रिस्पेक्ट टू द शेल डज नॉट कन्फाइन टू एनी फील्ड ऑफ एनी कंपनी, इट्स a basin wise distribution, and so that we like to explain about the shale sequences and the data wherever we got that is good for the investment purpose of Pakistan, so people should know what are the potentials and how we are going for the exploitation of the shale gas in Pakistan. And it should be a very open discussion, and we like to discuss science and geology and engineering if there is an issue, and so we should keep ourselves in technical ways. So we are not discussing about any company, about company assets, and about any personal opinion. So we can have a personal opinion, but will not be pointing finger to anybody. So it's just housekeeping. So we should be very careful whenever we talk about the companies or anybody other confidential data. So we will try our best to explain a few misconceptions we have or some good conceptions we have as well. So the overall presentation outline is that I will be explaining little bit few slides about energy outlook of Pakistan, what is current status of our energy outlook and what we have projected and where we stand, and what are the indigenous hydrocarbon resources we have. Similarly, we will be talking about what are the primary source of energy available in Pakistan and current exploration activities, world hydrocarbon resource just distributions, expected world energy mix, unconventional reservoirs, potential shale gas sequences in Pakistan and shale reservoir ranking, shale resource potential and risks, USA shale comparison with Pakistan, ये बड़ा important है हमारी understanding के लिए, and then workflow status where we are now at the moment in Pakistan, which is a very important slide, and it will explain you what we have done up to now and where we are moving. And then there are some few two slides about the way forward, what we should be doing in future. Just this is just one request. That's one request. अगर आपको PowerPoint presentation मोड में करना है सर, ये PowerPoint ही है ना? अच्छा सॉरी, presentation मोड मैं अच्छा लगेगा. yes sorry. Thank you sir. Yes, here. So this was the projection in 2008, and luckily you can see that the people who have forecasted this energy demand and supply is exactly matching to some extent at this moment. So we are now, you can see the big gap in yellow area, the import is increasing and our indigenous local supply is reducing. Second projection was made in 2020, and you can see that the indigenous oil production, this is oil production, is about 17%. It is coming from last about 2018 onward, the same kind of production we have from different companies, and continuously it is declining. Unfortunately, we are unable to arrest the depletion. However, we are making some good contribution from various companies for the oil production, but still it is on declining trend and our import is increasing.
So this is a really issue that how we should arrest this decline, how we should not arresting, but how we should be whenever we talk about the reserve replacement ratio, how we should be increasing our reserve replacement ratio more than 10%. According to the international scenario, at least you should have a 110% replenishment rather than only 100%. If you are just taking 100%, so you are just having a straight line to some extent, but we need 110, 120% replacement so that at least 20% increase should be there after depletion. So this is a gas scenario. So you can see our indigenous gas supply is continuously declining, and our LNG import is continuously increasing. And that is really unsustainable. Import of LNG, now everybody knows that the crisis of the Ukraine and Russians and all these people, all these countries are suffering because of the LNG and supply of gases, and every country is suffering. And Pakistan, particularly being an undeveloped country and having a real issue with its foreign exchange reserves, so this is import of the energy, and we wanted that this graph should move up. This indigenous supply should move up, and we should reduce this LNG. And the only thing we can increase this production is by having exploration, and all we are talking about the shale gas exploitation, unconventional reservoirs, so that we can arrest this decline and we can move to the increasing trend with respect to the indigenous supply. So this is really unsustainable to keep the import of our fuel every year and increasing, and we are spending a lot of money on this. So these are the indigenous hydrocarbon reserves and resources we have at the moment. We have a tight gas about 42 TCF reserves, and the conventional gas reserves we have remaining about 23 TCF, 21-22 data. Crude oil we have 320 million barrel, and shale gas resources, that is 3,500 TCF is the estimated shale gas resources we have in Pakistan. So these are not reserves, so please keep in this mind, these are the shale gas resources. The potential you can share shale gas resources has been calculated, and coal is one of the best blessing of Allah on Pakistan is 185 billion tons. The shale oil resources is about 370 billion. So all these billion barrel of shale oil and shale gas resources has to be critically reviewed, exploited, and all those further calculations and confirmation of these resources and reserves has to be carried out by the company by drilling more data, by getting more data, by testing not only one pilot well, but number of wells to firm up all these numbers. So primarily the existing energy supply by source. Now you can see that Pakistan at least have 80.6 million ton oil equivalent is the energy consumed in Pakistan every year, in which oil is contributing 22.6%, gas is 33.1%, renewable unfortunately is 1.2%. This is another area our government or we should be thinking that we need to increase this renewable part. And coal is only contributing 18.2%, that has to be increased as well, because it is another indigenous resource that can replace our imported fuel or gas or oil by utilizing this coal. Hydro and electric is about 13.3%. LNG, now it is 10.3%. It may go up to 20% if this condition remains same. LPG is another big market for Pakistan. Now LPG is contributing only 1.3% of total energy. This is going to be increased according to some analysts. It may go up to at least 20 to 30% next 10 years, because Pakistan is now trying to import LPG from various countries to make up this, to supply this gas to the consumer, to the domestic consumer. So this is another area which has to be addressed. However, but this is the overall energy supply to the present scenario. Now, what are the energy resources we have or what we are doing? Exploration of oil and gas in Pakistan started 1866. First well was drilled in 1866 in Pakistan, and in America, the first well was drilled in 1859. So unfortunately, from 1866 to 2022, we could not aggressively explore our Pakistan with respect to the oil and gas.
and that is the only reason that we are suffering. Exploration activities are in all provinces are being carried out. More than 2,700 wells have been drilled up till now. 50 to 100 wells are being drilled every year. Maximum well we drilled up till 101 in 2016, 17 or something like that. So these are the wells number we have. Last year we have drilled less wells. So 50 to 100 is the maximum wells we are drilling. And different petroleum policy exists since 1994. So now unconventional resources. We have a tight gas and we have a shale gas. Tight gas policy exists and being produced in a small quantity by a few companies. However, its full potential is not being exploited. Shale gas, no policy exists and no exploitation and exploration yet. Other part of the energy resource is the coal. We could have a coal bed methane. We can have a conversion of coal to liquid and gas, and we have another source of energy, geothermal energy. And all these three items still there and no work started yet. Currently, we are producing about 70,000 barrel of oil, and gas is about less than 3.3. Now it is 3.2 something, but 3.3 to 3.2 BCF per day. LPG, we are producing 2032 metric ton per day. Coal locally 9.3 million ton year, and we are importing coal 18.85 million ton. And LNG import for last year was 222 BCF. So this is the energy oil supply demand and outlook. They have presented that. You can see that we have a constant import of oil and constant decline in our indigenous oil, and similarly like gas. So these are the exploration blocks of Pakistan. The exploration activity in all over the country is there. Just a map. Everybody knows. Just for sake of fill in the blanks, I put this map here. The other question is, this is another map which we have to consider. There are a lot of blocks are missing here. Somehow I don't know why the block missing, but now you can imagine that in whole Pakistan, the total area, whenever we speak about the sedimentary basin or sedimentary area is 827,000. Under exploration is 21,100,000 square kilometer. Only two areas are actively in exploration. One is the Khyber Pakhtunkhwa, another one is the Sindh and part of this Balochistan, which is a part of Indus Plain. So these only two areas we are aggressively exploration. The major challenge for us is the frontier areas like Punjab platform and Balochistan area and offshore area. So out of 5 best places in Pakistani basin, only we are exploring 2 out of 3 out of 5, where 3 really need a concentration work and they have real challenge for exploration of oil and gas. Balochistan and Pashin Basin, Punjab platform and offshore, they have their own unique challenges. We unfortunately as a country, we could not work aggressively even for the basic understanding of like source rock maturity and source rock evolution. Still we are confused in these 3 areas, and that is the reason that unfortunately we could not explore these areas. And this is real challenge. Whenever we talk, people are not drilling a lot of wells. So company asks us where to drill a well. Where are the places? Where are the prospective zones? Maybe somebody may have some knowledge, but the basic ingredient of exploration is source rock, reservoir, and trapping mechanism. Migration is another one, but these 3 are the components. So these 3 components, these frontier area has all these 3 challenges, and we have to understand and we have to work hard to find out where we can go for exploration of oil and gas in these 3 frontier areas. This is just one resource triangle. People believe that 75% resources are in unconventional. Only 25 to 30% are resources available for conventional. So this means that in all over the world, including Pakistan, we have to concentrate on exploitation and exploration of unconventional resources. So this is just a comparison of country. Canada from 2014 and 2050, they wanted to go for unconventional reservoir. This green is the tight reservoir, and this red color is the shale. So you can see China is also moving higher for the shale gas, and United States is also moving too high for the exploitation of shale gas and tight gas.
and others coal as well. But mainly the countries are focusing to increase their production by exploiting unconventional reservoir. So just this is another EIA diagram, EIA data. In 2020, you can see oil and gas. In 2050, still you will be, the oil and gas will be constituting 70% of energy in the world energy mix. So the future of geoscientists and petroleum engineers are bright. You know, people usually talk now the oil is gone, and this profession, geoscientists and engineers, petroleum engineers are related to sciences, are little bit a difficult position. But if you see the EIA data, in 2050, still 70% your energy mix is from the fuel. Just a basic tight and reservoir and shale reservoir, just for those people who are just attending for sake of understanding. Like tight reservoir, as you know, we have a sandstone or carbonate with good storage capacity and defined coarse medium. In Pakistan, the tight reservoir definition comes, the reservoir which has less than 1 TRC is a tight reservoir. It is most of the time it is not a source rock. It is a better chance of fracking, less chance of packing, and better productivity, less capital intensive, and no adsorbance. Shale compared to it is a sedimentary rock with good storage capacity and very fine sediments. Permeability is less than nanodarcy, and source rock, and it work as a reservoir as well. Very difficult to frack, more chances of packing, less productivity. Mineralogy plays important role. Radius of drainage is very limited. Free and adsorb, we have both type of gases available here. So just see, this is another transition from conventional to shale, and from shale to conventional. The conventional reservoir is the reservoir permeability is more than 1 millidarcy. Various types of the fluid are there. Tight gas similarly less permeable, and shale is micro and nanodarcy, and dry gas and wet gas, major free and minor adsorbed gas is available. So just this is another ranking. According to the data, there are 3 types of the shale reservoir we can have it, organic shale reservoir. In case of the shale reservoir, which is in low category, if the TOC is less than 1%, porosity is less than 2%, clay is more than 50%, SW, water saturation is 65%, is considered as a low reservoir. Moderate TOC is 1 to 2.5%, porosity is 2.6%, clay is 50 to 30, and SW is 65 to 40. High ranking shale reservoir, which could be a good potential, where the TOC is more than 2.5%, porosity is more than 6%. Clay is very, very important, and people know this, is it needs to be less than 30%, and SW need to be less than 40%. That could be a good reservoir. So just a comparison in 2013 probably, EIA published one map that in Pakistan, and with respect to the India, you can see the dark color where we have written, we have a Pakistan name. So the whole Pakistan has a shale gas reservoir distributed all over Pakistan compared to India. So we need to exploit this, and we need to de-risk all these resources we have. In 2011, probably somebody has written a paper, and ENI and PPL and OGDC, probably there is a reference that they come up with this map. So the red circles indicates tight gas presence, and the blue lines encircling all these red color circles are shale reservoirs. So this means, luckily, the good thing is there that particularly a lower Indus basin, we have a tight and we have a shale reservoir above and below. So you can have a conventional reservoirs above, and you can have a shale reservoir below. So in the same well, you can evaluate conventional and unconventional reservoir. This is another good, you can say it's a blessing to some extent. You have a chance to evaluate tight, shale, and conventional reservoir in the same well, and you have a liberty to complete the well, to test the well, and to get more data, and to evaluate all these potential in those areas. So these are the shale horizon. You can say in Pakistan is the Ghazij formation, Talhar shale, and the thickness of the Ghazij is from 100 to 1200 meter, and it is at prospect level. Talhar shale is 4500 to 100 meter. It is a proven potential. Shales of massive sand 10 to 60 meter thick, and it is a prospect.
Sambar formation 500 to 600 meter thick, and it is a proven potential. Chichali formation 35 to 130 meter thick, and it is a prospect as well. So these are the shale reservoir properties. If you are talking about lower Indus Basin, Lower Goru, Talhar shale, the thickness is about 80%, the TOC is 2.5, and porosity is 6%, and clay is about 40%. Lower Goru shale are massive, of Cretaceous age, as 150 meter thick, 1.5 to 3 TOC, and 5 porosity, and 35% clay. Sambar has a 300 to 600, 2 to 3 TOC, 4 porosity, and 35% is the clay. So all these properties are appealing ones. Similarly, Middle Indus Basin, Goru and Sambar and Chichali, they have 100 meter, 350 meter thick. So the TOC is the range of 2.4 to 2, porosity is from 6 to 12, and clay is from 25 to 45. Chichali has a little bit higher clay minerals, which is a little bit detrimental, but these are the properties. Upper Indus Basin, we have a Chichali, shale of Datta as well. So the thickness of Chichali is about 100, and this is average thickness. And Jurassic shale of Datta is 60 meter, and TOC is 2 to 4, 15% porosity, and 40% is the mineral. Sambar area, over all in these basins are about 122,000 square kilometer, and Talhar is about 55,000 square kilometer area is covered by these shales. Now, the overall resources which has been calculated is the gas in place. Sambar is about 1800 TCF, Ranikot is 40, Lower Goru is 1600, Ghazij is 70, and 3510 is the total estimated resource available or has been calculated for these reservoirs. I have deleted all those risk GIP and risk technical recovery reserves because the risk GIP have a different definition for different people. I will cover a little bit further. What are the risks we are talking about with respect to the shale? So because I deleted these numbers, which is because something which is highly risk for us, but less risk for somebody else. And with new technology, with new understanding, all the risks are start de-risking it. So I'm just telling you about the resource potential. Risk oil in place, 285 million shale oil is in Sambar according to the data. Ranikot 50, 28, Lower Goru 8, Zij, and 370 billion barrel oil shale is available. But if you see about its risk recoverable results is very, very low, very, very low, because we have less data. We need more data, more wells to control all those points and to determine whether all these numbers are firm numbers or they are high risk or they are less risk. So all these risks has to be addressed by drilling more data, by getting more data, by getting core data, shale data, log data, so that we can reduce the risk. If you see their numbers, very, very low number with respect to the risk recoverable reserves. So these are usually the risks people are talking about with respect to the shale. Suppose there is a discontinuity of shale horizon, or horizontally, laterally, effectively. Loss of hydraulic energy and lower pressure due to fault leakage conduit for non-indigenous water. Most of the time, sometimes you frack the well, particularly tight gas, you can see that in petrophysics, there is no water, but when you frack it, you will get a lot of water. We have seen somewhere else. Similarly, tectonically, there is an increase in hydraulic fracture pressures, higher pressure on component material. So there are a lot of risks. Similarly, the gas composition is another risk. What kind of gas we will be having it in all those shales? If you have a high H2S, high CO2, or low CO2, or low H2S, it will be good. So composition of the gas has to be determined from each shale horizon to find out their quality. Other issue is that most of the gas, I will show you another graph, we have a dry gas, which is not good with respect to the economical recovery of the shale gas. America has a more success with respect to shale gases because they produce a lot of condensate oil or oil associated oil with the gas, or oil associated with the gas from the shale horizon.
That makes a really good economics. If you have a dry gas completely, and we have seen some gas from Sambar and particularly from Sambar, they are really a dry gas. So economically, it is, sometimes it's very difficult to justify exploitation of shale gas in a low quality, in a low quantity. So this is another little bit drawback for us. An assumption made to calculate GIP, Langmuir, isotherm extract, all these are the risks associated with the shale. Similarly, the oil composition, what kind of oil composition we have and how much it is, whether it is a flowable, it's a heavy oil, lighter oil, and it's all the risks are involved in the composition of oil as well. So that's just a maturity. With respect to maturity, you can see Talhar, shale of massive, and Sambar is, I have just copied these maturity curve. They lies at dry gas level. So this is another, economically it is not good that shale gas has no oil. If it has the oil, it will make much better economics. This is the comparison between the Barnett shale, Marcellus shale, Talhar and Sambar. If you see, the upper one is the considered gas content ranking guideline is if the gas content is less than 50 SCF per ton, it is a poor gas. If moderate gas has 50 to 100 SCF per ton, good reservoir is the 100 to 150 square cubic feet per ton, and excellent shale reservoir is that one which has more than 150 SCF per ton. Now, if you see the Barnett shale, the gas content minimum is 12.6, maximum is 226.9, average is 79. Marcellus shale has a 34.60 minimum gas content, maximum is 328, and average is 101.96. Now come to Pakistan. Talhar shale. Talhar shale has a 49.20 minimum gas content, which is very matchable with the upper one, much better than upper one in American shales, and 98.50 is the maximum, which is not comparable to the Marcellus and Barnett shale. Average value for the Talhar is 71, where the Barnett shale, which is being produced, is average gas content is 79.40, and Marcellus is 101. Similarly, Sambar gas content minimum is 121 and maximum is 134, and average is 126. So this means if you see compare the Sambar, Talhar with Marcellus and Barnett, they are comparable to some extent, and that give us little confidence that our gas content are good, and it may give us a very encouraging results. This is another spider diagram. They say that our Sambar shale is a blue color. It lies inside the spider curves from the Barnett shale, Fayetteville shale, Eagle Ford, and Marcellus. All those shale horizon which is producible in America comes in the same pattern where we have in our Sambar and Talhar. So this is another triangular diagram. The upper one is the WCLA, is the clay dominated, and the left one is the silica dominated, and the third one is the carbonate WCR. So now if you see, our Talhar is coming, and Talhar and Sambars are coming in this boundary where we are in between 45 to 55 range. So this means that out of these 1, 2, 3, 4, 5, 6 shale producer in America are matchable with our Sambar and Talhar shale. This is the Langmuir isotherm. So you can see that methane storage capacity is reasonably good, and similarly, the methane Langmuir regression is also matching with it. So the storage capacity is also good. This is the diagram which need to be addressed, which need to be understood by our participant. So this is the usual exploration flow work of the shale. So first is the data analysis, that in Pakistan this has been completed up till now. Whatever the data were available, the geological, geophysical, geochemical, geomechanical, and petrophysical data has been evaluated, analyzed, and they move forward in evolution potential. And second one is the reservoir parameter, TOC, maturity, mineralogy, brittleness, geomechanical, stress direction, stress barrier, reservoir containment. This has been already determined, calculated, and worked out.
Third one is the validation with lab tests. Rock evaluation pyrolysis has been carried out. Original TOC computation has been done. XRD mineralogy has been done. Triaxial test has been done. Gas content analysis has been done. Isotherm has been done. We are now at these final two stages. Identification of sweet spots. Studies have already identified the sweet spots for the drilling of the wells. Identification of the zone has been done. Landing point with respect to the drilling of the well, the drilling plan has been done. The landing point, horizontal, vertical, how much horizontal, how much vertical, where we have to go, this has been done. Drainage area has been calculated. Because the simulation study was carried out, all the simulation work has been completed. The production forecast from the formation has been determined through the simulation. Production forecast has been done and economics has been already done. Breakdown test was initially carried out as well. Now they are going to have another breakdown test. Operational now at the end of the day, the operational execution. So we are frac design has been completed. Water management already has been taken care of it because in Sindh area we have a good water available. Just now flood has done some to some extent. A lot of water is there now. If they will start some fracking, but water issue is not there. Logistically, the things have been planned, and the production facility already exists in those areas where the well will be drilled and will be connected to the networking facility. So just coal bed methane, with respect to the coal bed methane, it probably exists in coal. There is evidences. Akmanasab has done good work on it and he has a better understanding. It has been established in Thar coal. According to one of the company, there was estimation up to 1 TCF coal bed methane is there in Thar area, but there's no conclusive estimate, but it has to be confirmed and need to be worked to find out the potential of coal bed methane in Thar area. So this is the way forward now. We have now understood that excellent extent of the shale resource exists in the country. Shale gases are comparable with US shale. Need to enhance exploration activity for shale gas. De-risking of the shale reservoirs is critically required by continuously acquiring the shale data. New blocks may also be awarded on the basis of the shale gas horizons. Need to untap unconventional reservoir by consortium of the company. So our companies, the national companies or multinational company, if they can make a consortium, they can generate more volume of work and there will be most cost-effective exploitation of the shale. Creation of skilled manpower. This is another very important area where our universities, they have to teach, they have to develop our skilled manpower for the unconventional resources. Technology also exists and can be applied in exploitation on commercial reservoir. Technology is not issue. If you have money, you can bring it here. Cost-effective exploration and exploitation of shale reservoir can only be achieved by generating more volume of work. So all those consortium companies, they should generate more volume of work. They can invite number of the company for fracking and for all the work. So they will be having a cost-effective services available from those companies. Research and development activities in the universities for unconventional reservoir has also been required because a lot of things need to be done with respect to the Pakistan. Already, a lot of research work has been carried out in various parts of the world, in developed countries, but for Pakistan particularly, we need to develop and we know what are the activities, what are the scientific research are going on, and we can understand in better way if we will start indigenously. Policy framework is essentially required for the exploration of shale gas. Unfortunately, in 2014-15, me and Dr. Iqbal Fareed, PPL, OGDCL made a model and presented the government, but still it is going on. And I don't know when with this policy framework will be there, but it has to be there, it has to be approved. Potential of coal bed methane need to be evaluated. Conversion of coal to liquid and gas is also required. This is another one thing in HDFB, I got a machine for the coal gasification and coal pyrolysis. So this is very easy work. We can convert easily coal to gas and coal to liquid. I believe nahi kar sakte kitna aasan hai, but somehow it is not being done. So I'm doing it, and we are generating some data for economic model for the investment of the investor to convert coal to liquid and gas. And that's it. Thank you very much. I hope things may be there, but if there are any questions, our experts are there, so you can ask questions to each other and to me as well. So I'm not shy of
understanding or not understanding, a lot of things, a lot of people are there, they will be able to discuss things. Thank you very much. बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। मेरे ख्याल में अब तक का जो समराइज वर्क था पाकिस्तान के शेल गैस पोटेंशियल के हवाले से डॉक्टर साहब ने बयान कर दिया है। तो फोरम इज ओपन, ऑल द पार्टिसिपेंट्स कैन शेयर देयर आइडियाज और सजेशंस, जो भी है इस पे बात हो सकती है। जी मेरा ख्याल में हक मिनाज साहब आपसे शुरू करते हैं। Thank you, Dasha. It was very nice presentation. It's a lot of learning for all of us. Perhaps that we really know very little about these shale resources. And it's not that the country is quiet. There are people have been working, and a lot of work has been done. It's really good to know. And Dasha has really summarized it very well. Having said that, in fact, there are many things that can be discussed about the way forward, about possible gaps in what we have done so far, or how we can else needs to be done. If all of us will start discussing about this, it will really be an endless discussion. So I have a little suggestion, and my suggestion is that each one of us has, and people in fact sitting around, they are probably more knowledgeable than I am. They should have a lot of views and their nice suggestion how we can take it to next level. So it's just a suggestion that what we do is we invite everybody in one session and let him present what he thinks about this shale gas resources, what is missing and what can be done and what should be done. And that way we will have a kind of good opportunity to listen to everyone in a kind of in-depth. I don't know if that makes sense, or if you agree about that, we can consider that. प्रॉब्लम अपना मैं जस्ट इसका रिस्पांस जस्ट ये अच्छी बात है कि ये जो मतलब द इंटेंशन इज गुड, वी लाइक टू इंप्रूव थिंग्स, हाउ वी कैन गो, ये चैलेंज ये है कि हाउ वी कैन हेल्प आवर एक्सपर्ट्स कैन हेल्प टू आवर नेशनल या मल्टीनेशनल कंपनीज टू मूव फॉरवर्ड विद न्यू थॉट्स और विद न्यू अंडरस्टैंडिंग। तो इसके लिए मेरे ख्याल में अगनाज साहब शायद यही कहना चाहते हैं कि जो कंपनी हम पाकिस्तान में जो भी इस स्टेज पे हम हैं, क्या हम उनको हेल्प कर सकते हैं, क्या हम न्यू तजवीज़ दे सकते हैं कि हाउ टू इम्प्रूव देयर वर्किंग और हाउ दे कैन गो। अब प्रॉब्लम ये है कि कंपनीज अपने एरिया में काम करती है, उसमें एक सजेशन आई थी कि भाई जो लोग भी एक्सपर्ट ओपिनियन अपनी देना चाहते हैं किसी भी कंपनी को, तो वो उनके साथ एनडीए कर दे, जिसके नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट, ताकि वो क्लोज एरिया में डिस्कस करें। अगर उनकी थॉट्स अच्छी है, वर्केबल है, हो सकता है उनके लिए हेल्पफुल हो। तो ये एक तरीका हो सकता है कि हम उन कंपनियों के साथ, क्योंकि कंपनीज जो है वो शाई है टू शेयर देयर डेटा, तो उनको उनकी शाइनेस को दूर करने के लिए, उनको अवेयर करने के लिए, नॉलेज देने के लिए, इट कुड बी पॉसिबल वी कैन द गुड एक्सपर्ट्स वी कैन गेट टुगेदर एंड वी कैन गो टू देम एंड वी कैन हैव एनडीए फॉर आवर कंट्रीब्यूशन। ये मुमकिन हो सकता है। इसके अलावा आई डोंट नो के व्हाट वी कैन। डॉक्टर साहब मेरा ख्याल देखे ना, अगर आप मैं साथी याद कर रहा हूँ, प्रैक्टिकली हम सोचे हैं तो आपने जैसे देख लिया है कि हमारे शेल के गैस और ऑयल का पोटेंशियल मेनली उन्हीं एरियाज में है जो कि पहले ही ऑक्युपाइड है विद योर लीजेस और ईएल्स, जहाँ एक्सप्लोरेशन लाइसेंस तो कम है बल्कि डीएनपीएल ज्यादा है, लीजेस ज्यादा है उन एरियाज में, और वो एरिया किसी ना किसी के पास है। अब ये है कि इसके लिए अगर कोई पॉलिसी पहले हम बना दें, मेरा ख्याल जाती ये है पॉलिसी यानी कि रेगुलेटरी और फिस्कल, कि हम जैसे कि पहले एक रूल एग्जिस्ट करता है कि राइट ऑफ एक्सप्लोरेशन इन द डीएनपीएल, तो उसी तरह का एक आसान सा तरीका बन जाएगा कि अगर ये लोग जिनके पास उनकी लीजेज है, अगर वो उसके अंदर शेल और गैस के लिए एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो वो उनका फर्स्ट राइट होगा। अगर वो नहीं करना चाहते हैं तो वो एरिया किसी और को भी दिया जा सकता है मौजूदा रूल्स के तहत। अगरचे प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज इसके अंदर है,
लेकिन कुछ ना कुछ तो इसके लिए करना पड़ेगा। एक तो ये बात आ जाती है, इसके लिए हमें उसकी आउटलाइन, इसके लिए हमारी जो आउटलाइन बनानी बड़ी आसान होगी, क्योंकि हमारे क्योंकि स्ट्रक्चरल या स्ट्रेटिग्राफिक टाइप ऑफ प्लेस नहीं है। हॉरिजॉन्टली आप देखेंगे तो वेरिएशंस नहीं आती है इसके अंदर शेल गैस के इतने पोटेंशियल में। हम कैसे कि 2-2 किलोमीटर बाई 2 किलोमीटर का भी एक एरिया बना देंगे तो कहीं इंटर जो कम्युनिकेशन है एरिया के दरमियान उसके इम्कान बहुत कम हो जाते हैं जी। वो रौले जो लीगल रौले है ना यूनिटाइजेशन वगैरह के, वो शेल गैस में नहीं होंगे। तो एक आसान सी पॉलिसी इसके लिए बन सकती है जिसमें इस तरह काम चल सकता है जी। अब तक हम जो है ना कन्वेंशनल प्लेस जो है अपने ब्लॉक्स बाहर के जितने इंटरनेशनल फोरम्स हैं वहां जाके बेचने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये हमने शेल गैस को इंटरनेशनल फोरम पे नहीं ले गए हैं। यानी जिन जिन के एरियाज में ये एरियाज फॉल कर रहे हैं शेल गैस पोटेंशियल के, उनको इनके अंदर यानी इन्वॉल्व करके इन प्रेजेंटेशंस को ये जो डेटा दिखा सकते हैं हम इंटरनेशनल फोरम पे प्रेजेंट करें अगर इसमें अट्रैक्टिव है। वो साकी साहब ऐसा है कि हमने व्हेन आई वाज देयर इन आईजीडीसी तो हमने तमाम फोरम पे ये डेटा दिखाया है कि उसी को तो काफी सारी कंपनीज को ये चीजें दिखाई हैं। जो सिर्फ एक चीज है जो कंपनी हेजिटेट कर रही है फॉर एक्सप्लोरेशन एंड एक्सप्लॉइटेशन ऑफ शेल गैस के, इस वक्त तक पाकिस्तान में कोई शेल का डायनामिक डेटा अवेलेबल नहीं है टू फाइंड आउट द प्रोडक्टिविटी ऑफ द शेल। देखिए शेल के रिसोर्स होना अच्छी बात है, बट टू मेक इट प्रोड्यूसेबल इज अनदर बिग चैलेंज। तो अभी हमारी जो कंपनियां काम कर रही है, अल्लाह करे कि जो हमारी नेशनल कंपनीज हैं जो पायलट वगैरह डील कर रही हैं, ये एक दफा प्रूव कर दें कि यस अवर शेल इज ए प्रोडक्टिव, वी हैव ए कंपेरेबल रिजल्ट्स विद इंटरनेशनल शेल एंड प्रोड्यूसिबिलिटी इसकी है। जब तक प्रोड्यूसिबिलिटी प्रूव ना होना तो आपके लिए बाहर से लोगों को आना बहुत ही मुश्किल है। तो हमारी जो कंसोर्शियम वाली जो हम बात कर रहे थे पहले भी, अगर ये नेशनल कंपनीज कंसोर्शियम बना के 10, 12, 15, 20 वेल डील करें, उनका डायनामिक डेटा लें, उसको फिर सेल करें, दैट इज द ओनली वे टू अट्रैक्ट इन्वेस्टर। Sir, वो एक presentation. I fully agree, Dr. साहब, I fully agree because if you look at this thing, साकी साहब जो आप कह रहे हैं ना कि हर एक exploration company को let them explore their shale in that area. That sorry. डॉक्टर साहब जो बात कर रहे थे ना, मैं ये करना चाहता था, ये डॉक्टर साहब को पता है ओजीडीसी और पीपीएल ने आगे प्रेजेंटेशन दी थी ये गवर्नमेंट को, डीजीपीसी को, जिसके अंदर उन्होंने अपने जो फिस्कल मॉडल पेश किया था वो बहुत ज्यादा उसकी कास्ट एग्जॉर्बिटेंट थी, और जो चीज चाहिए वो पैसा हमारे पास वो पायलट प्रोजेक्ट अगर यानी कम से कम मेरे अंदाजे में जो हमने आइडिया रखा हुआ था कि कम से कम 10 वेल का एक पायलट प्रोजेक्ट होगा, और मे बी वी हैव टू डू कपल ऑफ पायलट प्रोजेक्ट, 2-3 हमें करने पड़े, और ये तकरीबन 10 वेल भी अगर आप 25 मिलियन का एक एवरेज वेल लगाते हैं तो 50 मिलियन है। अगर 3 प्रोजेक्ट करते हैं 750 मिलियन का ये खर्चा है जी। हमारे यहाँ के जो रेट चल रहे थे अब तो और ज्यादा हो गए होंगे, चंद साल पहले की बात कर रहा हूँ। तो वो इतना सरमाया भी हमारे पास नहीं है ना, जब तक कि हमें कोई मिले नहीं हमारे पास। ये देखने की बात है कि कंपनी है, गवर्नमेंट के पास है नहीं। मूव फॉरवर्ड करते हैं। हमारे साथ आजम मुस्तकीम है कनाडा से, तो हम ये चेक करते हैं कि कनाडा में शेल गैस के हवाले से क्या हो रहा है और आजिर साहब इसको किस तरह से देखते हैं। जी आजिर ताहिर साहब, मैं इसमें थोड़ा ऐड करना चाहूंगा, मुझे थोड़ा इजाजत देंगे आप? जस्ट 2 मिनट जी। ताहिर साहब जी, जो साकी साहब ने बात की है ना, ये इट्स अ प्रैक्टिकल। साकी साहब चूंकि डीजीपीसी में रहे हैं और मैं मारी में रहा हूँ, ये टाइट गैस के हवाले से जो शेल गैस और टाइट गैस इंटरलिंक है, ये बेसिकली मैं बात कर रहा हूँ। जितने भी शेल गैस और टाइट गैस के एरियाज हैं इनमें मोस्ट ऑफ डीएनपी लीजेस हैं। अब प्रॉब्लम ये है उन डीएनपी लीजेस एरियाज में ना उनको वो रिलिंक्विश कर रहे हैं और ना वहाँ पे एक्सप्लोरेशन हो रही है, ना टाइट गैस पे एक्सप्लोरेशन हो रही है और ना शेल गैस पे एक्सप्लोरेशन हो रही है। अब उसको ब्रेक थ्रू करने के लिए पॉलिसी इज द ओनली सोल्यूशन। अब पॉलिसी के मल्टीपल मॉडल हो सकते हैं, साकी साहब एंड डॉक्टर साहब कैन अंडरस्टैंड वेरी वेल। उसमें फर्स्ट राइट ऑफ रिफ्यूजल दे दें जिस कंपनी के पास है, और अदरवाइज इसको सेपरेट करने के अलावा देयर इज नो अदर सोल्यूशन। ओवर। उसके अलावा बाद में मैं टर्न पे बात करूंगा। थैंक यू सो मच।
बिल्कुल। थैंक यू खोसो साहब, थैंक यू। खोसो साहब थैंक यू। हाँ, मैं हाजिर मुस्तकीम, साकी साहब, मैं I agree with you, Saki Saab, but the policy have to be open. Like, you know, either exploration, I will only give example of Canada, like, क्योंकि इधर मेरा सारा career is Canada में. I was in the tight gas exploration in 2003, and since then, all the Montney, every shale play, I was part of it here. क्योंकि सर्विस कंपनी जाहिर है, उनके साथ सारी कंपनियों के साथ काम करना पड़ता है. तो पॉलिसी जो इधर है ना, दैट इज अ पीएनजी राइट्स. लाइक आपको पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस राइट्स हैं आपके पास, वर्टिकली डिसेमिनेटेड राइट्स, क्या आपके वर्टिकली आप बिड करते हैं, लाइक ओपन बिड होती है, इसमें क्लोज बिड होती है, और आप तो आप ब्लॉक कर सकते हैं. एक्चुअली 10 और 20 सेक्शंस इकट्ठे आप करके ब्लॉक को भी कर सकते हैं. सो एक्चुअली इट इज अ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस राइट्स. इट डजंट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन शेल गैस, टाइट ऑयल, शेल ऑयल, व्हाटएवर ऑयल, जो भी कोल बेड मीथेन के, क्योंकि कोल राइट्स जो थे वो पहले कंपनियों के पास थे, तो दैट इज व्हाई coal bed methane have a little bit different rights, क्योंकि कोल के राइट्स डिफरेंट कंपनियों के पास थे, तो वो कोल के राइट्स और कोल गैस के राइट्स फिर वो मिक्स हो रहे थे. तो अदर देन दैट, ऑल द रेस्ट ऑफ द कन्वेंशनल एंड अनकन्वेंशनल राइट्स आर ऑल टुगेदर. तो पॉलिसी एक ही है. अगर आपके पास ब्लॉक्स हैं, जैसे DNPL लीज है या आपकी एक्सप्लोरेशन लाइसेंस है, if you test it and you produce it, it's yours. You can farm it out to somebody else, but you can't just take it away from companies. Irrespective आप कह रहे हैं कि वो GDC है या PPLI है, जिसके पास भी है, आपके प्राइवेट स्मॉल कंपनी के पास भी हो सकता है. जब राइट है तो उनका फर्स्ट ऑफ राइट रिफ्यूजल की बात नहीं है. आप उनके वापस नहीं ले रहे. आप उसका ऑयल, क्योंकि टाइट में से ऑयल, टाइट गैस के अंदर आपके पास थिन स्टिंगर होंगे जो कि कन्वेंशनल होंगे, हाई मिलिडार्सी के स्टिंगर आएंगे आपके दरमियान टाइट गैस के अंदर. शेल के अंदर आपका सिल्ट स्टोन आएगा, जिसमें आपकी डार्सी फॉल्ट की वजह से आपकी 2 मिलिडार्सी, 3 मिलिडार्सी, कभी कभी 10 मिलिडार्सी आपका शेल के अंदर सिल्ट स्टोन होता है, जो कार्बोनेट लेयर्स होती हैं. तो दैट इज the point is that if you start separating, like Khoso is saying, that if we try to separate everything, that okay, this is shale gas, and try to define it is not definable. आप conventional play मैंने सारे देखे हैं, इधर अमेरिका के भी और कनाडा के भी, they are actually carbonate layers within the shale which actually produce. It's not shale which produce. अगर मैं थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन सारी आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ. हमारे जो रूल है ना यहाँ पे, वो भी जो हम लीज ग्रांट करते हैं, दैट इज लिमिटेड बाय वर्टिकल बाउंड्रीज. हम होराइजन की उनको राइट्स देते हैं प्रोडक्शन के, ठीक है ना जी. और उसके अंदर ये हमारे जो आपके यहाँ है, लेकिन ये हमारे के अंदर कि अगर वो डीपर या कोई और एक्सप्लोरेशन करना चाहते हैं अपने एरियाज में, उसकी उनको इजाजत है, लेकिन उनमें मेरा ख्याल है फर्स्ट राइट है. या तो इसको या कानून को चेंज करना पड़ेगा कि जो उनके लिए होराइजन एलोकेट कर दिए प्रोड्यूसर होराइजन, लेकिन शेल गैस बाकी एक्सप्लोरेशन के लिए अगर वो खुद गवर्नमेंट को नोटिफाई करके वो एक्सप्लोरेशन उसकी करना चाहते हैं, एक्सप्लॉयटेशन करना चाहते हैं, उसका अलहदा वर्क प्रोग्राम गवर्नमेंट को दे दें, और अगर उनकी डिस्कवरी हो जाती है तो उनको अकॉर्डिंगली उनके राइट्स मिल जाते हैं प्रोटेक्शन के. अगर वो नहीं करना चाहते हैं तो फिर ये कि हम गवर्नमेंट किसी भी पार्टी को एक्सप्लोरेशन के राइट्स अलाट कर सकती है उसमें. ये इस तरह मॉडिफाई करना पड़ेगा इस तरह. साकी साहब, यहाँ भी आपके सारे जो हैं वो प्रोडक्शन राइट के, आफ्टर यू प्रूव समथिंग देन यू रिवर्ट द रेस्ट ऑफ द राइट्स. सो वर्टिकली जो है वो बाकी सारे रिवर्ट हो जाते हैं आपके राइट्स. वो दैट इज राइट, लाइक यू आर आई कंप्लीटली एग्री. ये इधर भी रूल वही है कनाडा में कि आपके जो है आप
टेस्ट करते हैं, आपका डिफरेंट जोन टेस्ट करते हैं, उसके बाद आपने राइट जितने बिड लिया हुआ है, जैसे सरफेस टू बेसमेंट राइट है फर्स्ट, उसके बाद आपने एक जोन से प्रोड्यूस शुरू किया तो बाकी राइट आपके रिवर्ट हो जाएंगे, वो दोबारा बिड में आ जाएंगे, तो नेक्स्ट टाइम जो बिड करेगा वो उसका पोर्शन में करेगा. दैट इज एग्जैक्टली, दैट इज नथिंग डिफरेंट फ्रॉम कनाडा. मुस्तकीम बात यह है कि ये आइडियली तो अच्छा है. हम पाकिस्तान के भी काफी सारे कानून जो है ना वो कनाडा ही को देख के अपनाए गए थे और सीधा नहीं काफी सारे तरतीब दिए. सिर्फ वो यहाँ मसला जो मेरा व्यू है, जो हमने रिकमेंडेशन लिखा है कि अभी जब भी ब्लॉक दिए जाए या डीएनपी लीज दिया जाए तो एक्सप्लोरेशन कंपनी से शेल और टाइट गैस की भी कमिटमेंट ली जाए, ताकि जिस तरह हम कन्वर्शनल के लिए कमिटमेंट लेते हैं, वर्क प्रोग्राम देते हैं, वो इन बोथ जोन के लिए भी कमिट दें, ताकि उनपे अगर वो जॉइंट वेंचर करना चाहें किसी के साथ शेल के लिए, टाइट के लिए, उनके पास ये ऑप्शन हो, और अगर खुद करना चाहें तो वो भी कर सकें. जब तक आप एक्सप्लोरेशन कंपनी को बाउंड नहीं करेंगे ना, उनको कभी भी ये कंपनियां अलाउड नहीं करती कि भाई एक एरिया में अगर वो वर्क कर रही है, ऑपरेट कर रही है कन्वर्शनल के लिए और अनकन्वर्टेड किसी और को दे दे एक ही ग्राउंड पे, एक ही जगह पे. इसलिए जैसे आपने कहा है कि कोई भी दुनिया में ट्रू शेल प्रोड्यूस नहीं हो रही, तो सैंड पैकेजेस हैं प्रोड्यूस हो रहे हैं, कार्बोनेट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं. इसलिए किसी भी ऑपरेटर को दूसरे ऑपरेटर को अपनी लीज में लाना प्रैक्टिकली काफी डिफिकल्ट है. मेरे ख्याल में जो बेस्ट तरीका ये हो सकता है, अगर ये वर्केबल हो, उसी कंपनी से आप जो भी ब्लॉक दिए जाए और डीएनपी लीज में भी चेंज की जाए कि जो भी जहां भी जिसके कंपनी के पास टाइट गैस रिसोर्सेज है, शेल गैस रिसोर्सेज है, उनकी कंपनियों से कमिटमेंट ली जाए डीजीपीसी, और वो कंपनियां या खुद करें या खुद जॉइंट वेंचर करें, ताकि उसको एक्सप्लॉयटेशन उसकी हो सके. अच्छा, दूसरी बात ये है डॉक्टर साहब, ये जो आजर मुस्तकीम फरमा रहे थे ना, हमारे यहाँ भी ये यानी कनाडा में और अमेरिका में जो थोड़ा बहुत मुझे इल्म है, वो प्योर शेल गैस नहीं है, ये शेल ऑयल नहीं है, वो भी हाइब्रिड है. हमारे यहाँ भी खासतौर पर सितंबर में हम देखते हैं तो वो थिन स्टिक्स है जो अदरवाइज प्रोड्यूसिबल नहीं है मतलब स्टैंडर्ड बेसिस पे. लेकिन जब आप शेल गैस के लिए फ्रैक कर रहे होंगे वो इंटरकनेक्ट हो जाएंगे, जिससे हमारे यहाँ भी रिजल्ट अच्छे आने का इम्कान है जब फ्रैक करेंगे तो, क्योंकि हमारे भी हाइब्रिड टाइप होंगे. सारी साकी साहब जो भी साकी साहब आगे बढ़ाते हैं तो जो भी क्वेश्चन करना चाहे. हाँ, सफदर हमारे साथ है शलम बजर से. सफदर आप क्या कहेंगे, आपके क्या तासुरात? अनाउंसमेंट ये करना चाहिए कि जो भी अपने पॉइंट ऑफ व्यू प्लीज हैंड रेज योर हैंड, ताकि हमें पता चले कि somebody like to speak, तो फिर आप उसे इनवाइट कर दें. बिल्कुल ठीक है जी. सफदर जी सफदर. Okay, I can. Yes, thank you, Tahir. Thank you, Dr. Saab, for the good presentation. I think it was good recap of all the knowledge available in different studies have been carried out. But I'm afraid most of these studies are very regional basis and lacks any recent data to update and particularly specific area wise. But I think I just gave quick overview for what my comments are. I'm here in Pakistan from 2015 onwards, and I've seen some work by local and international companies on shale and tight gas. But of course, there is any combined effort as a JV based is lacking because of different companies have their own agenda. And from government, DGPC or ministry side, there's no any effort to bring them together. There were every well in Lower Indus Basin being drilled through Lower Guru shales and Sambar. There is a element of tight gas and shale gas. The quality and quantity may vary. I think there is some element of quick results. That's not the case for shale gas. If there's something quick thing can be done is tight gas, but shale gas require long-term effort and some incentives, which is basically most of non-existing. Except OGDC recently reaching to the stage where some solid frackability test could be conducted and potential could be further established. Otherwise, we have very sketchy information so far about shale gas. I think tight gas
the problem is that we pursue one thing and left on one thing on the back burner. We pursue the other one and put the other one. So I think in total, unconventional resources development in Pakistan is not going on track. That's what I'm afraid. ये सफदर साहब जो फरमा रहे हैं ना डॉक्टर साहब, ये सही कह रहे हैं कि बेसिकली ये है कि जो भी इन एरियाज में जहाँ पे शेल और गैस का पोटेंशियल है, जो भी कन्वेंशनल वेल ड्रिल करते हैं, उनके लिए मैंडेटरी करार दिया जाए कि ये डेटा एक्वायर करना है, जहाँ पे अदरवाइज वो लॉग रिकॉर्ड नहीं करते हैं, वो काम नहीं करते हैं, कुछ उनको बना के देना पड़ेगा। ये इनके जिम्मे लगाएंगे। एक मिनट और दूसरी बात ये करें कि ये जो मिनी फ्रैक की बात कर रहे हैं ना, जो पोटेंशियल एरिया है, कम से कम मिनी फ्रैक की हद तक जो उनके नॉर्मल कन्वेंशनल प्रोग्राम नहीं होता, ये अगर डीजीपीसी को कहें कि ये उनके लिए मैंडेटरी कर दे इस तरह का डेटा एक्विजिशन जो है वो नहीं वेल्स के अंदर, तो वो भी आपके लिए फायदेमंद होगा इन द लॉन्ग रन। यस, ठीक जी। आत्मना साहब जी सर, मैं मेरा ख्याल था, मुझे जो यही एक्चुअली डर था कि जो हमारी डिस्कशन है ना बहुत बिखर जाएगी एंड विल बी डिफिकल्ट टू रैप इट अप। साकी साहब हैज excellent points and full of knowledge. I really would suggest, number one is, before I say anything else, that we should give a full presentation by Saki Saab so that he can express himself and all the great ideas that he has. Now, having said that, we have some good points, Dr. that you initiated initially about the way forward. That is really the kind of thing that we have to focus on. That what is it that next we need to do? Kind of way forward. That what you said is drilling some pilot wells and testing them and making them flow and kind of proving the concept so that we can attract foreign investment, because we should understand all of us that it will need billions and billions of dollars to develop shale gas. And no company here in Pakistan has that kind of deep pocket. So we have to kind of take that thing as given that it is not doable with the financial resources of Pakistan. So the only way forward is to prove the concept by having some pilot wells and then go for international investors. So to attract international investors, we should kind of think upfront that if there is a lease basically occupied by one small company, they are not specialists of shale development, they are not interested in that, that will become a bottleneck. So that should be, it's important to somehow cover that thing under policy. They have a benefit, they have facilities, so and knowledge of that area and everything. So it is nice if they can be integrated, but they should be kind of forced to develop that shale gas. This is one thing. The other part is technology. That's very important, and the fundamental technology, as we all know, is horizontal drilling and fracturing. We don't have enough knowledge of this thing, enough experts in this thing, and when it comes to hydraulic fracturing, we don't have that resource available over here. If any company wants to do this thing, they have to think of millions of dollars of mobilizing all that equipment to Pakistan. So that thing has to be kind of sorted out together with service companies. So I believe these are two bottlenecks. And the other thing is, that's what you said, is developing this knowledge base and skilled workforce in Pakistan. That is that's other very important thing. ये सफदर साहब मुमकिन है कंफर्म कर सकें कि अभी पाकिस्तान में हमारे पास हाइड्रोलिक फ्रैक के कितने यूनिट मौजूद हैं, या क्योंकि कुछ तो फ्रैक हो भी रहे हैं ना, टाइट गैस के भी हो रहे हैं, कि बाकी ऑपरेटर जो है उनके Saki साहब, I can tell you there is very small horsepower. Probably there is something like 20 to 30,000 horsepower. We need in fact much more than that. कैपेसिटी भी बता देंगे किस कैपेसिटी की अवेलेबल है, अगर इनको पता है। सफदर साहब, Saki Saab, yes, we have one fracking unit in Pakistan at the moment. We can bring more if service and if our customers require more. And at the moment, we are capable to frack tight gas and up to, I think, 20,000 psi. So
The one with the shale gas project for OGDC, we are basically assigned for that. सही है, ठीक है। तो एक आध वो इतने तो नहीं होने जैसे बात दिख रहा है। एक है आपके कंपटीटर का भी कोई है यूनिट मौजूद है? सॉरी दोबारा कहिए। मैंने कहा किसी और आपके जो कंपटीटर कंपनी है कोई, उनका भी किसी का कोई फ्रैग यूनिट मौजूद है या सिर्फ बर्जर का ही है? एट द मोमेंट किसी और कंपनी का पाकिस्तान में नहीं है। इतना काम ही नहीं है हमारे यहाँ। So this is the thing is that it is like a chicken and egg. Which one comes first? You should have some enough business. जरूरी है कि नहीं मुनासिब, जब तक वर्क वॉल्यूम नहीं होगा ना, कोई कंपनी बाहर से फ्रैग यूनिट क्यों रखेगी यहाँ पे आते? मसला तो ये है, जब तक कंपनियां वर्क प्रोग्राम ना बनाए, 15 या 20 या 50 फ्रैग जॉब ना हो, तो ये क्योंकि एक जब फ्रैग यूनिट है तो बड़ा कॉस्टली पड़ता है। अगर आपका 100 फ्रैग Dr. Sir, ये देखिए कि we have kept one frac unit all the time from many years, and certain times 1 year, more than 1 year, there was none frac job. So यही कहता हूँ ना कि वॉल्यूम ऑफ वर्क जनरेट करने की जरूरत है कंपनी को। यही कह रहा हूँ कि वॉल्यूम ऑफ वर्क चाहिए, हर कंपनी बैठे तो वॉल्यूम ऑफ वर्क जनरेट करे ताकि आपको कॉस्ट इफेक्टिव पड़े। तो 3-4 कंपनी आ जाए जो फ्रैक करने वाली हो और आपके पास 100 वेल्स पड़े हो, तो ये कॉस्ट इफेक्टिव हो जाएगा फिर कंपनीज के लिए। नहीं डॉक्टर साहब, आई थिंक वी टॉक अबाउट लॉट ऑन कास्ट, still without any competition and without volume. I definitely, knowing the regional experience, based on that, the cost is not the basically limiting factor here. सच है, बहरहाल फिर भी एक कंपनी है ना, तो अगर आपका 100 वेल्स फ्रैक के हो तो साफ ज़ाहिर है वॉल्यूम का डिस्काउंट मिलेगा आपको। अगर 4 कंपनी आ जाती है तो डेफिनेटली इट विल बी हेल्पफुल टू सर्विस कंपनी, दे विल हैव अ मोर बिजनेस एंड E&P कंपनी फॉर द कॉस्ट इफेक्टिवनेस। सर जब 100 वेल की बारी आएगी ना, इन प्रिंसिपल वेल भी जो है वो तो यानी कि एक की जगह बात दिखने होंगे ना, तो हमें तो एक यूनिट भी होगा तो वो 10 वेलों के लिए काफी है, क्योंकि 10 वेल भी बेजक वक्त हमारे यहाँ नहीं होंगे। जब 10 वेलों के पास 100 वेल की बारी आ जाए, साकिब साहब हमने एक 2 दफा एक्सपीरियंस हुआ कि हमें जब वेल ड्रिल कर, एक तो हमारी जो प्लानिंग इशू है हमारे E&P कंपनीज का, वो ये भी है कि जब वो कन्वेंशनल के जाते हैं तो अनकन्वेंशनल के लिए डेटा के अलावा उनके पास कोई जॉब करने का प्रोग्राम भी नहीं होता। अब जब टाइट रिजर्वायर आ जाता है उसे सस्पेंड करना पड़ता है, जी हमने इसको डेटा नहीं लिया, फ्रैग यूनिट नहीं आई, रेट मोबिलाइज करना है, जिसकी बेसिस पे बहुत से वेल ऐसे हैं जो सस्पेंड कर दिए जाते हैं बिकॉज एट दैट पॉइंट इन टाइम देयर इज नो फ्रैग यूनिट इज अवेलेबल probably, or they have another well to drill and they cannot do all those frag job or even mini frag job at that point. ये एक मसला है। हमारा जो अवेलेबल हमारा जितना वॉल्यूम ऑफ पेस ऑफ वर्क है उसके मुताबिक लोगों की अरेंजमेंट्स होती है, लेकिन जब हम इसको डी रिस्क करने के बाद हम 100 वेल की बात कर रहे होंगे, प्लान कर रहे होंगे, वो खुद ब खुद लोग चले आएंगे। अभी तो इन हालात में है ना, जिसने हमारे एनुअली हमने वेल ड्रिल करने और जो रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक अरेंजमेंट्स हैं, ठीक, वो सूरत हाल चेंज हो जाएगी। Another important item is, sir, we have to bring the well drilling and completion costs down. This is too much. We have to spend something like 4-5 times more than what they are doing in US. So unless we bring down the drilling and completion cost of a well, there is no way that we can move forward. This is really a big problem. वो चिकन है वाली बात है ना, अगर हम वॉल्यूम ऑफ वर्क होगा तो नीचे आएगी। अजहर मुस्तकीम बात करना चाहते हैं, प्लीज जी, गो अहेड अजहर। No, sir, it's very good. Like all the things are very good. एक तो पहली most important task, हर एक कंपनी जो प्रोड्यूस कर रही है, they have the money. So don't try to tell all around the world that we don't have money. Yeah? So I think Pakistan companies, they are selling oil, they are in the business of oil and gas, they do have money. That's why they are there. So if OGDC PPL doesn't have money, they can fold and go home. So we all run companies here in Canada, like with a 10 million, 100 million or $1 billion budgets. So budget is nothing to do with how you invite people. You know, we work on a 100,000 budget ourselves,
and we invite $5 million well to drill in unconventional. I just presented yesterday. So it's a $10 million or $20 million well. Somebody will come and drill with you if you are giving them the percentage which they need to in order to drill. So the oil companies, first of all, if you're saying only 7 years of oil left, then what the companies will do? So they have to come out. So first of all, every company should have a business development program to go internationally on their own money, not on government's money. On their own money, they go internationally, sell their prospect, prepare their prospect and sell it. ये जो जनरलाइज बातें हैं, ऐसे ही कंपनियां कर रही है, बाहर जो भी जा रही है अपने पैसे ही दे रही है। ऐसी गवर्नमेंट पाकिस्तान कोई भी पैसा नहीं दे रही, वो शेयर होल्डर है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, बट कंपनी अपनी पैसा लगा रही है। तो ये मैंने पहले ही बात की थी आलम मुस्तकीम साहब कि इंटरनेशनल फोरम पे सेल करना है जाके अपने आप को, और टारगेट करते हुए हमारा टाइट गैस और शेल गैस इन्हीं फिगर्स को जाके हमने करना है। और इसी क्योंकि हमारे पास कन्वेंशनल के लिए अभी इतनी अट्रैक्टिव चीजें नहीं है, इसमें कोई अट्रैक्शन है तो इसको पहले जाके हम सेल आउट करेंगे, बेचेंगे तो मुमकिन है लोग अट्रैक्ट हो जाए, उसमें भी चांस होता है ना। ठीक है जी, अपना तुफैल खोसो आप साहब, आपने हाथ खड़ा किया हुआ है। Can you hear me? जी जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, हाँ आवाज आ रही है। Can you hear me? जी जी आ रही है आवाज, आपकी आवाज आ रही है आपकी। उनको खुद नहीं आ रही, हमें तो आ रही है। I think he cannot hear us. अच्छा, आप हमें नहीं सुन सकते, हम आपको सुन सकते हैं। आपने अपना माइक बंद किया हुआ मेरे ख्याल है। नहीं, वो लगा ले, हेडफोन लगा लो तो। हाँ, अब आवाज नहीं आ रही, चैट में बताएं। उनका माइक खराब हुआ है। हाँ जी हाँ जी सर, मीनवाइल एक सवाल जो काफी लोगों की तरफ से आया है, जैसे अभी आवाज आ रही है ताहिर साहब? जी आ रही है जी, आ रही है। बात करें, आवाज आ रही है ताहिर साहब? आ रही है। टेक्स्ट करो भाई ताहिर, उसे टेक्स्ट करो तो फाइल को। हमें आ रही है यार, आपको हमारी नहीं आ रही। हाँ तो वही ना, तो उसे टेक्स्ट करो ना कि लिख दें, सवाल लिख दें। हाँ अच्छा ताहिर, सवाल क्या हो रहा है? सर सवाल ये जो लोगों की तरफ से आ रहा है कि जैसे अभी आपने प्रेजेंटेशन दी है, इस प्रेजेंटेशन से तो लगता है कि लॉट ऑफ वर्क हैज बीन डन ऑन रिसोर्स पोटेंशियल और मुख्तलिफ एस्पेक्ट से, और सिर्फ लास्ट की जो 2 चीजें हैं, जैसे आपने कहा कि फ्रैक जॉब्स करनी है और थोड़ा बहुत जो डेटा, बाकी रेस्ट डेटा तो हमारे पास मौजूद है। असल जो सवाल है वो ये है कि पाकिस्तान, जैसे अभी आया भी आज़र भाई कह रहे थे कि अगर हम एक तरफ से ये बात आ रही है कि 6-7 साल के अंदर या मैक्सिमम 10 साल के अंदर आपके रिजर्वायर डिप्लीशन के ऊपर हैं, और अभी पाकिस्तान क्योंकि एनर्जी स्टार्विंग कंट्री है और गवर्नमेंट के पास अभी पिछले दिनों इतना पैसा नहीं था कि आप LNG या ऑयल इंपोर्ट कर सकें, क्योंकि आपका जो है वो इंपोर्ट का बजट इतना बढ़ गया कि एक्सपोर्ट आपकी ना होने के बराबर है। तो अब जो सवाल है वो ये है कि गवर्नमेंट को कैसे कन्विंस किया जाए, जैसे भी साथी साहब कह रहे हैं कि जी 3 पायलट प्रोजेक्ट करने चाहिए और एक पायलट प्रोजेक्ट में 10 वेल हैं और एक वेल की कॉस्ट जो है वो 25 मिलियन है। तो वो क्या फैक्टर्स हैं, वो क्या चीजें हैं कि हम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को कन्विंस करें, जहां वो नॉर्मल वेल ही नहीं कर रही, यानी पाकिस्तान में इस टाइम टोटल और नंबर वेल्स जो हैं वो 70 और 80 वेल पूरे हो रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, और शेल गैस के लिए तो हमें एक्सेसिव ड्रिलिंग प्लान चाहिए, उसके बाद एक्सेसिव फ्रैकिंग प्लान होगा, और अगर हम ये काम करेंगे तो हो सकता है अगले 7, 8 या 10 साल के बाद हम शेल गैस से कोई चीज जो है सिस्टम में इनपुट कर सके। तो इन 10 सालों में जहां एनर्जी स्टार्विंग कंट्री है, जिसके पास पैसे भी नहीं है, उसको हम कन्विंस कैसे करेंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि हम शेल गैस का काम क्यों करें। अपना ताहिर, इसकी गवर्नमेंट को कन्विंस करने की जरूरत थोड़ी, गवर्नमेंट को सिर्फ पॉलिसी के लिए कन्विंस करनी चाहिए। अदरवाइज ऑल कंपनीज आर इंडिपेंडेंट टू ड्रिल वेल फॉर देयर शेल, अगर उन्हें शेल पे जाना है और काम करना है। जैसे अजहर ने बात की, मुस्तकीम ने, कि कंपनी आर फ्री टू ड्रिल वेल,
अब मसला सिर्फ ये है कि पाकिस्तान में पार्टिकुलर शेल और टाइट का, क्योंकि बहुत कम कंपनियों या सबसे आसान जो चीज है वो शेल के मुकाबले में टाइट गैस की डेवलपमेंट है, जो लेस कैपिटल इंटेंसिव है और मोर प्रोडक्टिव भी है। शेल के चैलेंजेस हैं, शेल रिसोर्स मौजूद है, लेकिन शेल उस वक्त रिसोर्स अवेलेबल होगा कि जिस कंपनी के पास अगर टाइट ना हो, कन्वेंशनल ना हो, और टाइट ना हो तो फिर वो शेल पे जाएगा अगर इसके पास मनी हो। आप देखें शेल गैस का एक वेल जो है 25 मिलियन का ड्रिल होता है, और मैक्सिमम जो गैस जो प्रोड्यूस होती है शेल के लिहाज से अगर आप देखें वो 5 to 10 मिलियन होती है, और नेक्स्ट 80% उसकी डिक्लाइन होती है फर्स्ट सेकंड ईयर में। अब एक लेकिन वो चलता 35 साल तक है, इसलिए एक पैड से 10-10 12 वेल चाहिए होती है ड्रिल करने के लिए। वो रिसोर्स की अवेलेबिलिटी तो यकीनी है, लेकिन कंपनियों के लिए प्रॉफिटेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से शॉर्ट टर्म में उन्हें टाइट और कन्वेंशनल रिजर्वायर को एक्सप्लॉइट कर दे, उससे जो प्रॉफिट जनरेट करे फिर वो शेल में जाए। शेल इटसेल्फ रिसोर्स अवेलेबल है, लेकिन ये उस वक्त होता है कि जब आपके पास अमाउंट या कैपेक्स हो और आपके पास टाइट और कन्वेंशनल की जराए ना हो। अब पाकिस्तान के अंदर कन्वेंशनल रिजर्वायर के लिए भी अनफॉर्चुनेटली उस तरह की एग्रेसिव एक्सप्लोरेशन नहीं हो रही जितनी होनी चाहिए थी। जितना काम हमें करना चाहिए था वो हम नहीं कर रहे। तो टाइट को पहले ज्यादा डेवलप करना चाहिए, जिसकी पॉलिसी भी है, और गवर्नमेंट इनकरेज करे कंपनियों को, बल्कि उनसे मैं तो कहता हूँ कमिटमेंट ले कि जिसकी डेवलपमेंट लीज में टाइट भी है, शेल भी है, उनसे कम अज कम शेल के डेटा के लिए, एक्विजिशन के लिए, शेल के टेस्टिंग के लिए टाइट को डेवलप करने का कमिटमेंट ले। इसके अलावा शेल पे वही जाएगा जिसके पास रियल मैनर में कैपेक्स होगा। वो डॉक्टर साहब इसका तरीका है, वो आपके पास पहले मॉडल मौजूद है ऑफशोर का। अब बिल्कुल है, जिसके पास शेल गैस का पोटेंशियल है तो आप नेशनल लेवल पे इनको कन्विंस करें कि एक ही बंदे का इतना फाइनेंशियल एक्सपोजर अगर नहीं चाहती है कंपनी, तो आप 4 कंपनीज मिल जाए ना, 5 मिल जाए कंपनीज, आप इक्वल रिस्क लेते हैं, इक्वल राइट्स होंगे आपके, तो आपका रिस्क ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट होगा 5 बंदों पे, तो वो आपके लिए इस तरह के फंड्स आप मैनेज कर सकते हैं। जब आपकी डील स्केल हो जाएगी किसी एरिया की, तो फिर मुमकिन है इंटरनेशनल इन्वेस्टर जो वो भी अट्रैक्ट हो जाए। एक मॉडल तो मौजूद है, इस तरह करें। ठीक है ना, 100% OGDC की बजाय 5 बंदों से 20% आ जाएगा आपको, इतना रिस्क आपका डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, मिटिगेट हो जाएगा। जी सिर्फ ये कि को प्रूव करना है प्रोडक्टिविटी। डॉक्टर साहब कैन यू हियर मी नाउ? मिलकर अब आ जाए डॉक्टर साहब कैन यू हियर मी? यस सर, जो मैं गुजारिश कर रहा था कि वी स्टार्टेड विद द वे फॉरवर्ड, नेक्स्ट वे फॉरवर्ड। हमारा जो पूरा प्रोग्राम था कि नेक्स्ट वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए, उस पर हम डिस्कस कर रहे थे। जी, इशू क्या है, चैलेंज क्या है? जब हम रिसोर्स दिखा रहे होते हैं तो रिसोर्स टाइट गैस के और शेल गैस के दोनों अट्रैक्टिव हैं, रिसोर्स तो अट्रैक्टिव हैं। द प्रॉब्लम इज जो शेल गैस के और टाइट गैस के जो रिसोर्स हैं उन एरियाज में हैं जहाँ पे ऑलरेडी डीएनपी लीज एरियाज हैं और पुराने ओल्ड डीएनपी लीज एरियाज हैं। साकी साहब को पता है, ही न्यू वेरी वेल। और वो लोग, उन लोगों का जो टाइट गैस और शेल गैस पे व्यू ये है, इन कंपनीज की मैं बात कर रहा हूँ, माइंडसेट ये है, फर्स्ट कम्स पॉलिसी। क्योंकि मैं पेपका में उस जो कमेटी थी, उस कमेटी का पार्ट था, टाइट गैस में भी और शेल गैस में भी। उन्होंने ये कहा, उनका ये ख्याल है कि ओपिनियन है कि बिकॉज देयर इज मल्टीनेशनल कंपनी एंड लोकल कंपनीज बोथ, इट्स अ मिक्सचर, कि पॉलिसी के बगैर नोबडी विल बी अलाउड टू वर्क एनीवेयर इन द कंट्री बिकॉज देयर वुड बी नो इन्वेस्टमेंट। तो मेरे हिसाब से देयर आर 2 पार्ट कि हम कंकरेंट हमारी पॉलिसी के, हमारे जो प्रोसीजर है, जो वे फॉरवर्ड है, उसके टू प्रोंग स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। उसमें नंबर 1 हमें पॉलिसी पे फोकस होना चाहिए, गवर्नमेंट को हम परसू करें बाय ऑल मींस के पॉलिसी कुछ ना कुछ पॉलिसी बनाएं, दैट्स नंबर 1। सेकंड, जो सफदर ने बात की कि क्योंकि कोई नेशनल कंपनी या मल्टीनेशनल कंपनी, जिस तरह आपने भी फरमाया, राइटली फरमाया, कि ये तो नंबर्स हैं, इस नंबर्स के लिए अब उनकी कंफर्मेशन चाहिए। तो जब तक कन्वेंशनल वेल्स पे उस डेटा को कंफर्म नहीं करेंगे, वैलिडेट नहीं करेंगे, तो जो साउथ में वेल ड्रिल हो रहे हैं उनमें अनकन्वेंशनल के लिए डेटा कलेक्शन को मैंडेटरी कर दें।
जब तक उसको मैंडेटरी नहीं करेंगे तो नो कंपनी विल एक्वायर द डेटा, वो फ्रैक जॉब हो वो मिनी फ्रैक हो। तो ये 2 पॉइंट यही है। बात आई थॉट आई सबमिट ऑन दिस फोरम। थैंक यू सो मच सर। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल सही है जी। जाहिर और कोई है, बस इसको क्या करें। फरासत साहब ने ज्वाइन किया हमें एमओएल से। फरासत साहब, अच्छा एक मिनट एक डॉक्टर साहब, ये जो जी। पॉलिसी की बात कर रहे हैं खोज साहब ने जैसे कहा, ये मैंने भी अर्ज किया था कि डेटा कलेक्शन की बात हम डीजीपीसी को कन्विंस कर सकते हैं कि क्या क्या मैंडेटरी इनके लिए करार दे, जो भी वेल कमेंसमेंट नोटिस उनके पास आता है। पॉलिसी पे मैंने चंद साल पहले काम शुरू किया था। आई हैव गॉट, मैंने रेलेवेंट लिटरेचर अपने पास डाउनलोड किया हुआ, इकट्ठा किया हुआ है। मेरे ख्याल में महीना है कि मैं महीने के अंदर मैं बना सकता हूँ। बना देना, बना के आप प्रेजेंट कर देते हैं गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट को कोई मसला नहीं है। आप पैसे देना उसको मुझे बनाने के लिए, तो मैं बना देता हूँ। ये पैसों की, देखिए पैसों की बात करें, वो एक वो लतीफा है ना बड़ा मशहूर के रीढ़ी वाले, एक आदमी दौड़ता दौड़ता क्या शरबत वाला कहता है मुझे शरबत दो, मेरी लड़ाई होने वाली है। उन्हें एक गिलास पिया, दूसरा पिया, तीसरा पिया। हमारी कहा भाई साहब कि किसके साथ लड़ाई नहीं हो सके, आपके साथ ही होने वाली है, इसलिए कि मेरे पास तो पैसे नहीं है तो शरबत। हमारे हमारे हमारी मंसूब की बुआई कर देंगे, कम से कम फीस बिलीला कर देंगे। पैसे आपने कमा लिए काफी। डॉक्टर साहब यही मसला है जब आप कहते हैं ना कि एक हम जो जितने कंसल्टेंट्स हैं वो काम करें, एनडीए साइन करें और काम करें। द थिंग इज दैट why would people we can spend a lot of time, we really would love to spend time, लेकिन जैसे कहते हैं ना फ्री जो है ना वो that is free no value. So unless we kind of make a framework to do something where we can justify our time, things will be difficult. नहीं, आई एग्री विद यू। इस तरह न, बल्कि मैं आपको डॉक्टर खालिद अजीज साहब की बात करूं, जो प्रोफेसर है स्टैनफोर्ड वाले, वो एक दिन आए हमारे एसपी के लेक्चर में, तो उसे किसी ने कहा कि जी आप आए और हमें हमारे लिए काम करें। उसने कहा कि मैं बिल्कुल फ्री काम नहीं करूंगा, आई लाइक टू हैव मनी, मैं वो पैसा आप ही को दूंगा, आप चैरिटी के लिए देते हैं, लेकिन गवर्नमेंट से मैं जरूर लूंगा, इसलिए कि फ्री काम की कोई वैल्यू नहीं होती। Absolutely. सच है, नहीं होती, इसीलिए तो मैं कह रहा था जी। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। जी मैंने अभी ज्वाइन तो अभी जूम मीटिंग में, तो आपका फोटो नहीं आ रहा, आपकी चले बात सुने जी। फोटो भी दिखा देता हूँ आपको। मैं आई वाज लिसनिंग ऑन द यूट्यूब, मैंने सुनी आपकी गुफ्तगू, लेकिन यहाँ पे मैंने अभी ज्वाइन किया, जरा मैं बाहर था। तो जो आखिरी पॉइंट से मैं थोड़े से 2-3 बातें सिर्फ कह दूंगा कि इस डिस्कशन के नतीजे में जो मेरे सामने आई हैं, विच में भी ए प्रैक्टिकल थिंग टू लुक एट। आखिरी बात जो की साकी साहब ने, हम सब ये चाहते हैं कि जो उन्होंने काम किया हुआ है, जो वो इसको रिफाइन कर सकते हैं, उसको कंप्लीट करके प्रेजेंट भी करें, और उनकी बात भी बिल्कुल ठीक है जिसको सबने सेकंड किया। ये बगैर पैसे के आप, इट डजंट वर्क लाइक दैट इन द प्रोफेशनल वर्ल्ड। तो ये तो मसला हमारे साथ देखें, ये पेट्रोलियम क्लब चल रहा है फॉर ईयर्स, इट्स ऑल ऑन वॉलंटरी बेसिस, और मुझे पता है लोग इतना टाइम देते हैं। दिस इज समथिंग टू लुक एट, कि जैसे ताहिर है उनका पूरी, आप देखें कितना काम होता है सिर्फ एक इंडिविजुअल का ही। तो उसके लिए कोई ना कोई तरीका हमें अडॉप्ट करना पड़ेगा कि हम इस पेट्रोलियम क्लब से भी कोई ना कोई थोड़ा बहुत यानी सर्वाइवल के लिए कुछ ना कुछ जनरेट कर सके। दिस इज बिसाइड्स द टॉपिक। अब टॉपिक के ऊपर जो बात की, बड़े अच्छे कमेंट आए। सफदर ने कमेंट किया कि हम शेल गैस के ऊपर हम सोच तो रहे हैं और बहुत अच्छे से सोच रहे हैं, और उसकी कुछ हमारे बॉटलनेक्स हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं, फाइनेंसिस के हैं, ये जो कुछ भी है, लेकिन इसी बैकग्राउंड में टाइट गैस भी पड़ी हुई है, जिसके हमने वेल भी किए हैं और जिसके कैंडिडेट्स अभी भी अवेलेबल हैं। तो मे बी एक प्रैक्टिकल अप्रोच, क्योंकि टाइट गैस की एक्सप्लोरेशन के अंदर तकरीबन वही टेक्नोलॉजी है, उसका एक अपस्केल कर दें तो वो शेल गैस पे चली जाती है। तो कम से कम हम टाइट गैस के जो कैंडिडेट्स हैं विच आर अवेलेबल विद वेरियस कंपनीज, एक कोई ऐसा प्रोग्राम हो कि ये तमाम कंपनीज उन सब अपने प्रोग्राम को इस तरह कोऑर्डिनेट करें कि हमारे पास 8-10 वेल इस तरह के आ जाएं। उससे ये होगा कि जो सर्विस कंपनी है उनकी, जिसकी सर्विसेज के लिए हम ये सोच रहे थे कि जी ये कैसे आएंगी, ये सारी चीजें कैसे होगी, कॉस्ट कैसे डाउन होगी, दिस विल हैपन। लेकिन किसी एक फोरम से इसको कोऑर्डिनेट करके तमाम कंपनीज को अपने वो कैंडिडेट्स आइडेंटिफाई करने चाहिए, और एक प्रोग्राम बना के 6-8 महीने का साथ उसको फ्रैक करते जाएं,
और एक कंपनी को एंगेज कर लें इसमें, तो इससे कॉस्ट का भी मसला जो है हल हो जाएगा। अब एक आखिरी बात यह है कि देखिए शेल गैस के सिनेरियो में हम जो कुछ काम कर रहे हैं या शाकिर साहब जो काम कर चुके हैं प्रेजेंट करेंगे, दिस इज वेरी गुड to keep it with us and even put it on the shelf for the other companies to look at. ये हर चीज के लिए, नॉर्मल एक्सप्लोरेशन के लिए भी यही है कि जब तक आप कोई चीजें उसमें नहीं रखेंगे शेल्फ पे अपने इनिशियल वर्क, तो इंटरेस्ट पैदा नहीं होगा कंपनीज के अंदर। या तो कोई बहुत बड़ी डिस्कवरी कर दे, जैसे वो अजहर जमील ने अपनी लास्ट पोस्ट में लिखा था ऑफशोर को कैसे डेवलप करें। ये चीजें तो हैं कि हम जब तक कोई चीज करके नहीं रखेंगे, लेकिन एट दिस टाइम are we really in a position to launch a big shale gas project? मेरे ख्याल से फाइनेंशियल, ऑल्दो अजहर मुस्तकीम का ख्याल दूसरा है कि ये कंपनीज के पास पैसे बड़े पड़े हुए, मुझे पता है कि ये कंपनीज जो है इस तरह शेल गैस के अंदर अपने तौर पे बहुत बड़े पैमाने पे इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। ये अभी जो ताहिर ने बताया कि वैसी जो कन्वेंशनल एक्सप्लोरेशन वेल्थ है वो भी बहुत कम हो रहे हैं, तो हाउ डू यू एक्सपेक्ट द कंपनीज, सर्कुलर डेट के मसाइल, दीगर मसाइल, don't expect the local companies to do much, लेकिन we need to do little by little। और उस little by little के अंदर जो सबसे पहली चीज है probably वो ये है कि हम किसी तरीके से एक या तो इसी पेट्रोलियम क्लब के जरिए एक वो बना दें 2-3 लोगों की कमेटी जो कि तमाम कंपनी से बात करके इस प्रोग्राम को 10-12-15 वेल के प्रोग्राम को एक बना लें कि टाइट गैस के जो उनके पास कैंडिडेट्स हैं, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम देयर। उसके बाद फिर हम बैकग्राउंड में शेल पे हम काम करते रहें और पार्ट ऑफ इट वो जो साकी साहब काम कर रहे हैं वो उसका हिस्सा। दैट्स ऑल आई हैव टू से। ठीक है, ठीक है। तो ये अच्छा आइडिया दिया है फरासिद साहब ने कि अगर हम पेट्रोलियम क्लब के प्लेटफॉर्म से ये जो हमारे कंसल्टेंट्स हैं, साकी साहब हो गए, हक मिनाज साहब हैं, आप हैं, बाकी लोग हैं, अगर हम ये कमेटी बना के और हम अपने प्राइवेट सेक्टर को अप्रोच करें और उन्हें कन्विंस करें, जैसे फरासिद साहब ने कहा कि कम से कम वो 15-20 बैल अगर वो टाइट गैस के ही कर दें, तो वो टाइट गैस के लिए ही उतनी आपको टेक्नोलॉजी जो यहाँ होगी वो फिजिबल हो जाएगी और आगे फिर वो आप अप्रोच कर सकेंगे शेल गैस की। मेरा ख्याल में एक अच्छी तजवीज़ है, इस पे सोचा जा सकता है इसके ऊपर। इसमें ये है ना कि जो टाइट गैस के यानी कैंडिडेट हो सकते हैं और ऑलरेडी ड्रिल्ड वेल है, ये खास तौर पर ये मिनाज साहब इसमें बहुत ज्यादा हमारे और सफदर साहब ये बड़ा की रोल प्ले कर सकते हैं कि जो ऑलरेडी ड्रिल वेल्ड है और उनको हम जो है ना जिसमें टाइट पोटेंशियल है टाइट गैस का और उन्होंने उसको डेवलप नहीं किया है, इन चीजों को रीवैल्यूएट करके वो फिर काफी ज्यादा वेल मुमकिन इकट्ठे हो जाए। पीपीएल के काफी वेल है, ओजीडीसी के होंगे या और कंपनीज के मुमकिन है, यूईपीएल वगैरह के भी हों, तो फिर मुमकिन ऐसे ये प्रैक्टिकल हो सकता है कि जिनको इन्होंने डेवलप नहीं किया है वो दोबारा रीवैल्यूएट करके उनको आप कन्विंस करेंगे, क्योंकि ये सीक्वेंशियली होता है एक्चुअली। पहले कन्वेंशनल जो वायर आते हैं, फिर टाइट गैस आती है और फिर शेल गैस पे जाते हैं। हम शेल गैस पे टाइट से पहले जाना चाहते हैं, मेरा ख्याल है। टाइट इजी है, पहले जाना चाहिए, पहले उस पे जाना चाहिए। ये वैसे भी लोग हैं दुनिया जान ऐसे ही जाती है। हम यही डिस्कस कर रहे थे कि टाइट जो है बेटर प्रोडक्टिविटी है, उसके ऊपर ऑलरेडी 2 कंपनियों ने काम किया हुआ है, फ्रैक किया हुआ है, जैसे पीओजीसी है, माड़ी ने भी कहा वो जो जरगून वाला फील्ड है तो उसको टाइट गैस की पॉलिसी उन्होंने अप्लाई की हुई है, पीओजीसी में की है, तो टाइट गैस इज वर्केबल है, उसमें कोई इशू नहीं है शेल के मुकाबले में, और वेल भी अवेलेबल है। लेकिन फराज वेल का मसला यह है कि बहुत सी वेल ऐसे हैं कि अनफॉर्चुनेटली वो उन्होंने या पीएनए किए हुए या सस्पेंड किए हुए हैं, और रिग की डिप्लॉयमेंट दोबारा उनको जो है री एंट्री की जरूरत है। लेकिन मैं जो फील करता हूँ कि हमारी बहुत सी हमारी कंपनियां जो है वो प्लान नहीं करती फॉर टाइट के लिए। बस जब टाइट में पहुंच जाए तो पता चलता है ये टाइट है, सफदर आता है लाग लेके सर ये तो टाइट है, अब तो जी टाइट सुर गया है, रेग लेके जानी है, यूनिटी नहीं है। I tell you interesting thing in that हमने कई प्री जॉब मीटिंग अटेंड की हैं, और व्हेन वी टॉक अबाउट दी कस्टमर्स के ENP कंपनीज के, अगर आपका टाइट सैंड्स आ गई तो आप उन्हें कहना नो वी डोंट हैव टाइट, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आवर इज वेरी कन्वेंशनल, तो देन वी ऑलवेज से comes tight you have to be manage it and the unavoidable। लेकिन सारे आई थिंक जैसे फरासत साहब ने कहा, डॉक्टर साहब आपने कहा, साकिब साहब कह रहे हैं, तो वी ऑल हैव कंसेंसस कि टाइट गैस शुड बी बेसिकली फास्ट ट्रैक एंड शेल गैस कंटिन्यू इन द बैकग्राउंड, नो डाउट। अब टाइट गैस का इशू क्या है? टाइट गैस का
डॉक्टर साहब आपके दौर में the OGDC did one and only frac job, alhamdulillah very successful, और उसके प्रोडक्शन रिजल्ट्स भी अल्हम्दुलिल्लाह हेल्दी। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उसके बाद क्यों नहीं फ्रैक हुआ? वाई माड़ी एंड यूईपी एंड PPL not able to develop further tight gas? POGC yes because they get the good price. तो इशू क्या है, मतलब बॉटलनेक क्या है? तो रूट काज ये है, दैट्स व्हाट आई हियर फ्रॉम दी सर्टेन ऑयल कंपनीज, और आपको भी यकीनन पता होगा कि देयर वाज सम वर्किंग ऑन दी रिवाइज इंसेंटिव फॉर द टाइट गैस बेस्ड ऑन दी सर्टेन ग्रुप ऑफ वेल्स एंड फील्ड एंड रिजर्वायर, नॉट कि एवरी सिंगल वेल हैज टू बी क्वालिफाइड in case of POGC. So if the naming mentioning is not taboo here, like PPL, OGDCL, MARDI, UEB definitely have tight gas candidates. They have the lot of work done already. So what is stopping them to execute? To me is only the government not giving them the price. नहीं प्राइस है समझो, प्राइस इज नॉट द प्राइस का नहीं समझो ऐसा है कि टाइट गैस की पॉलिसी एग्जिस्ट करती है। आपको इस वक्त तकरीबन $8 से $9 मिल रहे हैं, तकरीबन $9 पर 1000 BTU गैस मिल रही है। टाइट की प्राइस बिल्कुल अवेलेबल है। जो प्रैक्टिकली प्रॉब्लम है ना, जो हम भी देखते रहे, आप भी आते रहे, कि पहली बात यह है कि हमारे बहुत से वेल इसलिए डिस्कार्ड हो जाते हैं कि उसमें सीमेंटेशन की वजह से वो फ्रैक काबिल नहीं होते। जो वेल यूज कर चुके होते हैं लोग, वो यूज नहीं होते। मतलब उसमें हम अनफॉर्चुनेटली, मैं जो पहले बात की थी, हम टाइट गैस के लिए प्लान ही नहीं करते। अगर वेल ड्रिल, जब आप जहां आपका वेल हमारा लोकेशन तैयार हो जाए, प्रॉस्पेक्ट तैयार हो जाए, तो वी शुड हैव ए प्लानिंग फॉर टाइट गैस डेवलपमेंट एज वेल। मतलब काफी वक्त गुजारा है। जब आप वहां पहुंचते हैं तो पता चलता है एक तो सीमेंटेशन के बहुत से 2 वेल तो इसलिए नहीं हो सके क्योंकि उनका सीमेंटेशन का मसला है, और वी कुड नॉट फ्रैक इट बिकॉज वो पीछे सीमेंटेशन नहीं है, और सीमेंटेशन की जॉब रेमेडी हो नहीं सकती। अच्छा वो रह गया जी। आप दूसरा उसके अंदर जो ज्वेलरी डाली थी वो भी खराब हुई थी। आप रेकलेस जॉब हो नहीं सकती, रेक लेके आना है, उसके बाद सीमेंटिंग करना है। सबसे बड़ा जो चैलेंज मैंने देखा है टाइट गैस की प्लानिंग के लिए, हमारे जो सीमेंटेशन होती है वो अनफॉर्चुनेटली सही नहीं होती, जिसकी वजह से वेल बात को आपको छोड़ना पड़ता है। तो हमें हमारी कंपनीज को, UPL है, माड़ी है, OGDC है, PPL है, OPL है, प्रीमियर है, PUL है, दे मस्ट हैव ए प्लानिंग फॉर द टाइट गैस मैनेजमेंट। बस वो नहीं है कहीं उसको कहीं डॉक्टर साहब पॉलिसी का इशू है। डॉक्टर साहब सही कह रहे हैं, पॉलिसी का इशू है, पॉलिसी का इशू है, बिकॉज देयर वाज अ सीरियस कंसर्न फ्रॉम वन कंपनी जो टेबल हुआ था पेप का फोरम पे। जो मेजर एरिया है दैट इज जो टाइट गैस का है, दैट इज सदर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, प्राइमरली सिंध प्रोविंस। उन्होंने ये टेबल किया था कि उनकी पॉलिसी में 5% OGDC कैरीड है। उसके बाद OGDC का शेयर इंक्रीज होके, गवर्नमेंट होल्डिंग और OGDC का शेयर इंक्रीज होके इट गोज अप टू 25%। उन्होंने ये कहा था कि हमारी इकोनॉमिक्स नहीं बनती, आप इसको खत्म करें। वो गवर्नमेंट के लिए इट हैज बीन अ वेरी वेरी डिफिकल्ट। तो पॉलिसी का इशू है टाइट गैस की जो पॉलिसी है ना, टाइट गैस ये इशू नहीं है, उसका एक और इशू है। एक तो ये 5% वाले के अलावा भी एक और इशू ये है कि हर वेल में हर जोन को सर्टिफाई करना पड़ता है। ये भी एक इशू है। वो भी है, लेकिन मेन इशू ये भी है उनकी, वो ये कह रहे हैं हमारी इकोनॉमिक्स नहीं बन रही है। वो तो रेगुलेटरी है ना कि हर वेल को आप सर्टिफाई करवाएं, दैट इज सम सॉर्ट ऑफ रेगुलेटरी। हर वेल में हर जोन को, जो भी हर जोन को, यस हर जोन को, ये तो रेगुलेटरी हो गया ना। बट यहाँ पे तो वो ये कहते हैं कि हमारी इकोनॉमिक्स ही नहीं बनती। यहाँ पे तो वो ये कह रहे हैं नहीं, जब फ्रैक होती है ना जी, वो तो डेवलपमेंट चला जाता है, वो एक्सप्लोरेटरी वेंचर में भी जाएगा। नहीं वो भी है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं डॉक्टर साहब। Everyone, we are talking about the policies. We came to talk about technical detail, like is it technically recoverable resources? Yes. So let's not get into the policies which is there, which is not there. Like let's talk about tight gas. Did you have a horizontal well into a tight gas in the somber sand or
I know there was announcement of the sand in Chiltern. They did a well, PPL did one in horizontal with frac in Chiltern. It didn't cover that much as it should have been. Sambar, they drilled one vertical well in Hadi 1X. They announced that it's a tight gas, and they never drilled a horizontal well into the Hadi, that reservoir. So did we drill any horizontal wells? I'm completely unfamiliar. We have drilled it, not in tight reservoir, but particularly in so we haven't done anything in tight reservoir yet. Tight reservoir. We just only tested a vertical tight reservoir. Here there are 100,000 wells which are tight sand. So we don't know the cementation with one well or two wells that okay, cementation is there or not. Not two wells, many wells. No, but did we test? Did we drill horizontal well? Did we frac it? सुनो OGDC ने अभी बनाई भी तो सब में बहुत टाइट नहीं है भाई 1 मिली जैसे लेकिन 2.5 किलोमीटर हॉरिजॉन्टल वेल ड्रिल किए हैं पूरा सिंध बेड के नीचे से ऐसी बात नहीं है हॉरिजॉन्टल वेल 8 वेल एक जगह से पैड में हुए हैं लेकिन वो कन्वर्शन के लिए बहुत मतलब जैसे अभी बनाई है वो भी एक वन ऑफ द टाइट रिजर्वायर है लेकिन हॉरिजॉन्टल वेल हुए हैं टाइट को पर्टिकुलरली एड्रेस नहीं किया गया नहीं इसमें जो सबसे ज्यादा एक मिनट ये जो सबसे ज्यादा हमारा टाइट गैस का पोटेंशियल जिसका है और सबसे ज्यादा रिजर्व वो एसोसिएटेड है वो POGCL पोलिश कंपनी जो है ना वो कर रही है किर्थर फील्ड जिसमें काफी सारे वेल उन्होंने ड्रिल किए और उनकी इन प्लेस भी मेरा ख्याल है 1.5 TCF के करीब है उसमें कुछ हॉरिजॉन्टल वेल भी ट्राई किए मुझे रिसेंट उसका नहीं पता कि बाद में हॉरिजॉन्टल कितना लेकिन उस जमाने में भी 500-600 मीटर तक हॉरिजॉन्टल वेल हमने ड्रिल किया था वो जो इतना सक्सेसफुल नहीं था तो वहां पे हॉरिजॉन्टल वेल की है लेकिन हॉरिजॉन्टल वेल की और भी काफी सारे वेल किए हैं एक और अपना साकी साहब और ENI ने 2 वेल हॉरिजॉन्टल किए थे अनफॉर्चुनेटली वी कुड नॉट मेक गुड सक्सेस ENI ने OMV ने टाइट रिजर्वायर में वेल ड्रिल किए थे लेकिन ये जो पहले मेरी स्लाइड में था कि जब हम पेट्रोफिजिकल एनालिसिस किया गया था तो वो देयर वाज नो वाटर जब फ्रैक किया तो 6000 बैरल पानी आ गया और वो दोनों वेल जो है स्पेंडिंग लॉट ऑफ मनी ऑन चंदनवारी 20 एंड म्यानो एक वेल था म्यानो 14 15 और 16 वो भी हॉरिजॉन्टल वेल की वो हुआ था लेकिन अनफॉर्चुनेटली सक्सेसफुल नहीं हो सका टाइट का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा नहीं रहा यानी हॉरिजॉन्टल वेल पॉइंट है लेकिन वो कुछ थोड़े वेल हुए हैं प्रॉब्लम यह है कि पाकिस्तान में एक ये भी मसला है कि 2 वेल फेल हो जाए तो लोग फिर उसको जाते नहीं उस तरफ लेकिन वी शुड नॉट बी डिस्करेजिंग आवरसेल्फ बाय ड्रिलिंग ओनली 1 or 2 wells we should continue Dr. Sahab, this is a very good point. I have to leave and I'll just make one couple of points that shale gas पे जो भी हम efforts कर रहे हैं I hope it will not become like an offshore project that we had that if we have one unsuccessful everything people will forget and to go back to any of the shale gas so whatever we are doing really this group and everybody is in complete dark at how things are being done so in the first few wells I think we really have to do things in a very well thought process that to make it successful because that could actually derail the further project completely or the shale gas development. As you said rightly just now, that tight gas mein ek well drill hua, it horizontal well drill hua, it produced water and nobody tried to do it again without really trying to see that what went wrong there. So we really have to take these first few wells, shale gas wells, differently and put all our efforts together. I mean, take it as a national cause. If these wells somehow they do not give those results that are expected, then it will be a huge setback to the whole thing. So really we need to work together as a task force, not just through as a Zoom, but a task force sitting with the data and doing something. And this is technically doing the thing correctly is very important, really. Agreed. बिल्कुल ये बात सच्चा है. You are right. We hope कि how to involve ourselves. Question is how to involve ourselves. How can we do this thing? I mean, how can we do this thing? If the thing is that it has to basically come from them, or I know everybody wants to become a sort of hero or taking that flag. I did that.
but that's not really the objective. It should be done correctly. It should be the thing that should deliver results rather than who is right and who is wrong, right? बिल्कुल ठीक है, I agree with you. So ये ठीक है आपकी बात. तो क्या डॉक्टर साहब कैसे कंक्लूड करेंगे? अब जो 3 चीजें आ गई हैं, एक तो ये है कि मैं पहला काम तो जो अभी कंसेंसस और आप टेक्निकली भी ठीक है कि टाइट गैस की डेवलपमेंट के लिए हमें सीरियसली सोचना चाहिए कि उसमें वेल भी अवेलेबल है और टेक्नोलॉजी अवेलेबल है और लेस कैपिटल इंटेंसिव है और उसका डेटा भी अवेलेबल है. नंबर 1 इसके लिए या जैसे मुनाज साहब कह रहे थे कि वी शुड हैव अ टास्क फोर्स to discuss and we can have a meeting with exclusive meeting with the company. या क्योंकि हमें डेटा तो देते नहीं होंगे ना, कोई कंपनी दे नहीं सकती कि भाई हम एज ए पीसीपी वी कैन नॉट आस्क देम टू प्रोवाइड द डेटा और वी कैन मे बी पेप्का के प्लेटफॉर्म से पेप्का से हम बात करें और एक जॉइंट फोर्स बना ले, टास्क फोर्स जो टाइट गैस की पर्सपेक्टिविटी या टाइट गैस के ऊपर डेवलपमेंट के ऊपर काम करके एडवाइस कर सके. जी इसको पहले एजेंडा पे ले ताकि इस कंप्लायंस की पॉलिसी भी एग्जिस्ट करती है और इसको एक्सप्लॉइट भी किया जा सकता है. उसके वेल भी अवेलेबल है, टेक्नोलॉजी अवेलेबल, नॉलेज इज अवेलेबल. सो जस्ट डेवलप दिस टाइट गैस. वो 42 CF जो है वो रिजर्व्स है बेसिकली, वो जो टाइट गैस के वेलों में ऑलरेडी मौजूद है और डेटा भी हार्ड डेटा भी है. पहला काम ये कर देंगे. दूसरा जो है शेल के लिए जो बात हमें करनी चाहिए और टाइट के लिए भी डेवलपमेंट लीजेस में हाउ दीज रिसोर्सेज कैन बी एक्सप्लॉइटेड, कि जो डेवलपमेंट लीज में है और वो कंपनी एक्सप्लॉइट नहीं कर रही और उनको जॉइंट वेंचर चाहिए या somehow government should ask them to develop those unconventional reservoir with joint venture with exclusively या वर्क कमिटमेंट उसे लेना चाहिए कि ताकि वो काम नहीं करे. 2 हो गया. तीसरा ये है कि अगर कोई जैसे टाइट गया, जैसे आप कह रहे हैं कि पॉलिसी फ्रेमवर्क आपने बयान किया तो उस पर डिस्कस की जा सकती है. वी कैन गो टू द गवर्नमेंट कि जी ये चीजें पॉलिसी में इसमें लकूने हैं या इसमें चेंज करने की जरूरत है. ये हमारी रिकमेंडेशन है और इसको चेंज किया जाए ताकि आप इन्वेस्टर अटेंड कर सके फॉर टाइट एज वेल एज फॉर दिस. मेरे ख्याल में यही है. इंटरनेशनल फोरम पे जो है ये आप जो भी चाहे अपने बंदे ले जाए और हम उनको प्रेजेंटेशन तैयार करके तो उसमें मदद करें कि वहां पे अब शेल गैस को ज्यादा मतलब हाईलाइट करे, ये जाए कि कन्वेंशनल रिजर्वायर को वहां पे मुमकिन है कि कुछ लोग राजी हो जाए. ठीक है, दोनों है हमारे ही अनकन्वेंशनल तो दोनों है ना, टाइट एंड शेल. लेकिन टाइट जो है ना वो क्या कहते हैं शेल के मुकाबले में लो हैंगिंग फ्रूट है टू सम एक्सटेंट. सर मेरे ख्याल है शेल गैस डेवलप करने का जो बेस्ट मॉडल है ना वो अर्जेंटीना ने यूज किया है, जिसमें YPF ने व्हाट दे डिड वाज दिस बेसिकली दे यूज्ड सम पायलट वेल्स, प्रूव द कांसेप्ट एंड देन इन्वेस्टर्स स्टार्टेड कमिंग बाय. एग्जैक्टली, बिल्कुल मेरा यही व्यू है कि हमें दैट इज एन एक्सेलेंट मॉडल दैट वी शुड फॉलो. बिल्कुल OGDC कर रही है ना, देखते हैं कि OGDC क्या करती है. अगर OGDC का वेल डील हो जाता है और पायलट प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो जाता है फिर you can sell this shale gas potential to other country. ये बिल्कुल अच्छी बात है. एग्जैक्ट यही होना चाहिए. जी एक जो मेरे ज़हन में बात आती है, देखें ये हम जिन डेटा की कॉन्फिडेंशियलिटी की बात कर रहे हैं, OGDC की स्टडी है, यूएसएड की स्टडी है. आपका क्या ख्याल है कि ये जो हमारी इंटरनेशनल E&P कंपनीज हैं जी उनको इनके रिजल्ट्स का पता नहीं होगा? आपस की बात है. किनको? ये जो इंटरनेशनल कंपनी है, बड़ी कंपनी, मैंने तो दिखाए हैं ना भाई साहब, मैंने 19 कंपनी को दिखाए हैं. हमें ये भी देखना होगा. देखिए वो इसलिए नहीं आ रही साकी साहब, ये सारा डेटा ऑन द बेसिस ऑफ द डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इंफॉर्मेशन पे कैलकुलेटेड है. इसकी जो प्रूवन प्रोडक्टिविटी है ना वो हमारे पास नहीं है कि वी कैन शो टू द पीपल यस दिस वाज अ शेल वेल ड्रिल हुआ है, इट हैज प्रोड्यूस्ड दिस मच, दिस इज द डायनामिक डेटा, प्रोड्यूसिबिलिटी है. अब देखिए ना पोलैंड आपके पास टिपिकल एग्जांपल है. पोलैंड इज ह्यूज रिसोर्स है लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हो सके, इसलिए तो हमें प्रोडक्टिविटी शो करनी चाहिए. हमारी जो नेशनल कंपनी है 2-4 वेल 3 वेल ड्रिल करे, इसका डेटा कलेक्ट करें, देन वी कैन सेल इट. कोई मसला नहीं है, आप यकीन करें पीपल विल कम. वो पोलिश कंपनी की प्रेजेंटेशन इन्होंने हमें दी थी, मैंने देखी थी. दे डिड मोर देन 50 वेल. ऑल इंटरनेशनल प्लेयर्स वर ऑलरेडी देयर, वहां पे थे और 50 वेल के बाद भी उनको जो है ना नाकामी हुई, वो उसको एस्टेब्लिश नहीं कर सके और फिर आहिस्ता आहिस्ता वहां से सारी कंपनीज भी भाग गई. ये बात तो अपनी जगह है ना.
वो मुझे जियोलॉजिस्ट मिला था जो जिसने उस एरिया में वेल भी डील की थी, वाज फ्रैक इंचार्ज एज वेल। उसने मुझे जब हमारी डिस्कशन हुई तो उसमें सबसे बड़ा जो फ्लास पॉलिश क्ले में उसमें क्ले कंटेंट ज्यादा है, बस दैट वाज द बेसिक रीजन। ही सेड टू मी कि बिकॉज़ ऑफ क्ले कंटेंट वी कुड नॉट फ्रैक इट। सिलिका कंटेंट कम है असल में, कम है टेक्निकली। बस बात ये है कि मैं अपनी बढ़ाई की बात नहीं है, ये आप लोगों में से सबसे ज्यादा मैंने ये नहीं हमारे कंदकोट वगैरह ये इसमें 1-1 मीटर का 1-1 फुट का बल्कि सैंपल देखे हुए हैं, और मेरी जो फील आती है ना उसकी ब्रिटलनेस की और उसकी फैसिलिटी की, मेरे दिमाग में वही फील आती है कि यार हमारा जो है ना ये फ्रैक्चरिंग के लिए इतने ज्यादा सूटेबल नहीं है। नहीं ऐसे नहीं, हमने क्वांटिफिकेशन की हुई है ना साकिब साहब। हम जो डेटा हमने देखा है हमने क्वांटिफाई किया है ना, कोर का भी वेल कटिंग सारा एनालिसिस हुआ है। वी आर इन मिडल, हम ना बहुत एक्सट्रीम पे हैं ना बहुत डाउन है, तो वी आर बिटवीन 30 to 45, तो ये फ्रैक्चरेबल है। 40 से या 45 से ऊपर जो क्ले मिनरल्स है ना, कट ऑफ जो है वो बहुत डेंजरस है कि अगर सिलिका आपका लेस देन 30 हो जाए, अगर सिलिका आपका मोर देन 60 है तो दिस इज गुड। क्ले आपकी लेस देन 30 है, दैट्स एक्सीलेंट। हमारे यहाँ क्ले कंटेंट है तकरीबन 30 जी। It is challenging to frack. I think the milestone of frackability is the key. The gas in place may be by high numbers, but frackability, unless we achieve that, yeah. फ्रैक्टिबिलिटी इज इम्पोर्टेंट। लेकिन हमने ब्रेक डाउन किया था ना, ब्रेक डाउन हमें मिला है सैंपल के अंदर ही। सैंपल जो है ना वो ठीक है, उसकी that might be the tight sand layers. ये ऐसे ही है, ये वही है हाइब्रिड। लेकिन मैं एक जो बात है कि ये जो हम एवरेज बता रहे हैं ना कि हमारी एवरेज जो है क्ले कंटेंट इतना है, जहाँ पे बेहतर हमारी उसकी होगी ब्रिटलनेस बेहतर होगी, फ्रैक हो सकते होंगे, मुमकिन है उसकी डेप्थ बहुत ज्यादा प्रोहिबिटिंग हो। डेप्थ इशू नहीं है वैसे। पीपीएल का पब्लिश पेपर है उनकी सैंपल शेल जो कि फ्रैक नहीं हुई, बट वी डिड एमडीटी फ्रैक, और वो पब्लिश पेपर है, एंड दैट वाज हाई क्ले कंटेंट एंड वी एबल टू फ्रैक विद डाउन होल एमडीटी 16 to 18,000 psi. Yes, depth is not issue now आजकल। अगर स्पेस है वेल के नीचे जो वेल बोर है वो अगर आपका 7 इंच बच जाता है तो ये तो आइडियल हो जाता है, लेकिन यूजुअली हम जो है ना वो स्लिम होल में चले जाते हैं। अगर आपका होल ठीक है तो डेप्थ इज नॉट इशू। हाँ, और प्रेशर का भी मसला नहीं है। फ्रैक आजकल फ्रैक हो जाती है, सिर्फ क्ले मिनरलोजी इज इंपॉर्टेंट। डॉक्टर साहब फ्रांसिस साहब की बात को आगे लेके चल रहे हैं। मेरा ख्याल है पेट्रोलियम क्लब की हम एक फोकस कमेटी बना लेते हैं, और अगला एक सेशन जो है हम जो हमारी ईएनपी की जो लीडरशिप है उनके साथ एक एक्सक्लूसिव ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन इसी टॉपिक पे हम करें और इसको आगे लेके चलें। 1 स्टेप अहेड हो जाएगा वो। चले वो अगर हमारी डिस्कशन में हर ईएनपी की एक्सप्लोरेशन जीएम या एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हमारी मीटिंग में अगर ये पार्टिसिपेशन नहीं है तो वी विल बी टॉकिंग टू द वॉल्स मोस्टली। डॉक्टर साहब अब मेरा ख्याल है कि वो नारा मारिए थे आप, जरा कंक्लूडिंग रिमार्क्स जो है बयान कर दिए, कैसे बताया पर इसको फिर हम एक क्लोज मीटिंग में फाइनलाइज करेंगे। एनीवे आई थिंक वी हैड अ गुड डिस्कशन, काफी सारी अच्छी इनपुट आ गई है, तो नेक्स्ट फेज जो है ना हम दोबारा डिस्कस कर लेते हैं। जो 2-3 ऑप्शंस आई है उस पे हाउ वी कैन हेल्प आवर और मेंबर जो हैं जो एक्सपर्ट्स हैं वो किस तरह नेचुरल काज के लिए कुछ काम कर सकते हैं, और हाउ वी कैन कंट्रीब्यूट आवरसेल्व्स। तो अब देखते हैं कि क्या कर सकते हैं। तो एनीवे हम पीसीपी की भी आप पे मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। वी आर वेरी थैंकफुल टू यू ऑल फॉर योर पार्टिसिपेशन, फॉर योर पॉजिटिव इनपुट, एंड वी हैव लर्नड a few things more today, and inshallah we will continue learning more and will be contributing to the national cause inshallah. Thank you very much. आपकी प्रेजेंटेशन है ये हमारे साथ शेयर कर ले, ये पार्टिसिपेंट के साथ ये कुछ शेयर कर देंगे, मैं देखता हूँ उसको कर देंगे। नहीं सर उन शेयर कर ही लइए ना, ਤੁਸੀਂ ऐसी कितने नकल मार के कितने हो रहा है। ये वैसे ये क्लोज करते हैं, लाइव सेशन जा रहा है ये इंशाल्लाह। प्रेजेंटेशन शेयर कर दें थोड़ा सा, ये बिल्कुल कर देंगे। तो इंशाल्लाह ये हमारा जो शेल गैस की जो हमारी हमने सेशंस करने हैं उनका पहला एक सेशन हमारा हुआ है। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि फुल सेशन जो है हम वो सर्विस कंपनीज के साथ करें और एक सेशन हम टोटल इसकी इकोनॉमिक्स के ऊपर करें। तो प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। थैंक यू।